it down on your notepad, then you will never have any kind of issue. Now, Okay. in this particular case, uh, what you're saying is that you have shorted the future and market goes against you. Now, what to do? So, Yeah. first of all, you should have figured it out before taking the trade. That Hmm. what you're gonna do. Now, the normal. I mean, before that, I want to understand. Before giving any suggestion, I want to understand that what is your target in terms of profit or stop loss when you are initiating this position, Okay. shorting this future. Okay. Okay. So I'm asking you, what is the target? That means how much amount you are ready to Around uh, suppose that 15,000 roughly. 15,000. So Yeah. what I would suggest is that if you're shorting a future, right, Yeah. then in that case, you should buy the ATM call option. Acha, buy And the ATM dollars. Okay. and if you're buying the future, then Yeah. you should buy ATM put option. This is the Acha. most Okay. safest. This is the most So safest. so that will make you. I mean, then you have specified or logged your maximum loss what you can have on that trade, which is the premium you would have paid to buy the put or to buy the call. So Okay. even if the market goes against you, that bought call or put will offset the loss you're making on the future. And So if you. market goes in your favor, then you can once that premium what you have paid, Yeah. once that much points the future is going in your direction, above that will be your Profit. kind of unlimited profit. Okay. So Okay. it is a conservative hedge strategy. Okay. But So you suggest means both these things. Either suppose you are shorting the future. So against if it is against it is against the market flow, then we need to buy the this call. no. No. Then When you short the future, at that time only you decide which strike call you want to buy and buy it with that only. Do not wait for the trade to or the market to go in the opposite direction. okay. Once Okay. it Okay. starts going in opposite direction, then that becomes too late, because that same call will be very expensive and you will have to pay more money. Okay. And Okay. most Okay. of the time what happens, that once you buy that call, market will turn from that point only. So Okay. you will Okay. start losing additional amount on that call as well. So Okay. these are not individual trades, these are paired trades. So Yeah. you're buying or shorting the future, at the same time you buy a put or call as well. So Okay. I mean, Okay. the whole point is that you should uh, try to plan your trade first and then execute that plan. Okay. Rather, we take a trade first and then we try to figure out that what we should Correct. do now. Correct. 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 Then Correct. PV the what the question he asked, it was pertaining to equity future. Now Yeah. the what Correct. the I'm question the Ram has asked, what the question Ram has asked, is suppose because of the unidirectional, you are short by 10 lot of currency in evening, or you are long by 10 lot of currency, and you are in a loss position. Then what should we do? Sir, in that case, what I would suggest is that we would have uh, already put in the max buy or max sell quantity. Yeah, yeah. So that is the quantity which I am comfortable having a long or the short position, and that quantity in my account will not give me sleepless nights. So this is the figure you have to figure out yourself. So suppose Correct. it is 20 lots. Mm. So once you have got long on 20 lots in currency, based on our observation or experience, we think that within a day or two, maximum 2 days, your trade should come in profit again. If it doesn't happen, then there are a lot of ways which I think Ram is already well versed. He was doing a lot of ITC covered call and I mean put option selling. So the same principle we can apply in currency here as well. It looks like when we look at the ticket size that the premium on put and call is very small, what we will get. But then we have to look at give it a holistic approach.
looking at that, see that amount is very less, but the margin we are using for that 20 lots is also very less. So we always have to look in terms of percentage, how much percentage we will be gaining in shorting the put or shorting the call. So we have to apply the same kind of strategy. Suppose if I am long by 20 lots and the market has come down, so I should not wait for market to come down, drastically, and then I try to sell the call, because then by that time it will be too late and no premium will be available on the call. So what you do is, as soon at the end of the day, if you see that I am going today, I'm going to go 20 lots long, then before market close, sell the call option as per, suppose if the currency is at 76 rupees, you had got 20 lots long on, then maybe at 76.50, 76.50 strike, you can sell the call option, equivalent lots, 20 lots call option. Right. Thank I'm you. clear? That, I'm yeah, clear? it's clear. It is clear. But you are the expert in covered collar, all this thing, now. Yeah. He's No. a champion I'm in not that. doing In much. ITC, he's doing 10 lots and whatnot. It's the same thing. Sometimes I feel that member test our knowledge also. No, but I'm not risking much on covered call these days. That's why I want to migrate to algo. But one thing I observed is this chain reaction theory would do well when markets, since you are taking care of this gap up, gap down, and then thereafter, if there is not much movement in the market, which is that is the story. I mean, that is the actually happening for the last few months. So it should work very well. It's working very well. For me, it's working very well. Very well, it's working. Yeah, and at the most, even if I'm going long or short, I'm willing to take the delivery or I'm willing to give the delivery. So I'm totally protected. Totally, only thing is that if the market, like 2021 January to October, it went up from 12,000 to 18,000. So in such markets, we don't know how this Ram, that 6,000 or 8,000 fall will not come in one day. Okay. So it will come slowly by 500 pound every day. So you can always reduce your quantity, na? You can increase your sell quantity and you reduce your buy quantity. That's correct. So what you do, that is what I have done it. Suppose I'm long, very long in say G, G tele, if I have say 5,000 share, okay. So I want to reduce my buy quantity, but I want to increase my sell quantity. What I will do, I will sell 100, but I will buy only 50. Oh, it's okay. So like that, I will manage that. Suppose I am very sure I don't have any quantity now. Say for UPL, I have sold everything because the price has come to almost 840. Okay. So now what I have done, I will go 100 buy and sell as only 50. So slowly, I will accumulate my quantity. So all those strategies you can use it. Right. Like that you can do it. Yeah. I think it's 11 now. So it's 11 now. Mr. Mail is already there. So I will request Mr. Mail to give the presentation on the live analysis of Nifty and Bank Nifty. Over to Mr. Mail. Mail means peacock in Tamil. Sir, it is. It's audible. No, echo is coming. एक मिनट में इनका करता हूँ. हाँ बोलिए. Now audible. Audible now. Yeah. Okay. So you can share your screen. I given you the sharing screen. 1 minute. Yeah. This Parmeshwaram Srinivasan asking Drive Google Drive need permission. So which Google Drive? No. Okay. No permission. Yeah. Little slow in screen keyboard. Okay. Myself. Yeah. The Google Drive is asking for permission. Isn't it? 1 minute.
You have to change the setting there that anybody who is having the link can download that file. Or we'll share other after the webinar. Don't worry. Okay? No, sir. Here actually we did something. Don't share that. I will give. Otherwise, I will give in a group. This is. Don't worry. Don't worry. You start your presentation. Give this later on. You start your presentation. 1 minute. 1 minute. You're not able to start? 1 minute. Now this link is okay because I checked in other thing. It is not asked to the. Take minute. Let me see now. Let me check. No, it is requesting for access. You have to change the setting. I will explain you in the evening. Don't worry. No problem, sir. We will send it in the group later on. Yeah. Okay. You start your presentation. To make this in the presentation mode. Yes. Mr. Mail will not speak for more than half an hour because he has some health issues. So let him complete the presentation first, and then any question we can ask from him. Okay. He has some health issues, so he will not be able to speak more than maybe maximum 30 minutes. Yeah, Mail sir, chalu kijiye. Good morning, traders. Actually, today I am taking the topic open interest, mainly concentrating or explaining the open interest of Bank Nifty as well as the Nifty. But we will go in deep the other things in a future further weeks. Now this purpose of this open interest analysis webinar is only to introduce Excel tool created by a trader for the purpose of the retailers. He is interested to issue all the retailers as a free. So to introduce, to give to us, is to the benefit of the retailers. We have discussed with Mr. Kothari sir, and he very much interested to issue it. So we are kind of planned for this webinar. So just a small introduction. I am basically an engineer, and there is not much need about me regarding the subject, and very much interested in learning. So this is bring to me the stock market, and I normally not in all field I just touched it. Even not a specialist, not a full gainer, I touched everything. So everybody will ask, you touched everything, it is a green? It is the answer. So how to make success? It is the reason fear of missing out. So how to improve our probability? Just we have to earn knowledge and develop the skill. So I learned so many technical things and other things. So which is giving a knowledge, even like Kothari sir earned much. Like that, I am also a favorite in learning. So I learned technicals and tools. So the basic knowledge of my areas are price action, volume profile, market profile, order flow, order block, and today topic open interest, gaps, pivots, trend lines, bands, Fibonacci, moving averages, normal distribution, Laplace distributions, and the indicators normally we are using RSI, by WAVE, CCA, MSI, and some scanners. Mostly the scanners and indicators, what are the need, I will prepare it. Something I will use from the trading view. So today topic is open interest. So the way is that where we get it to open interest. So now everybody knows they are all are experienced people. We are getting the open interest details from
NSE website. NSE website itself. 1 minute. I will share the pages. Just taking where is the pages? This is Hilega Milega. No, it is not that. This yesterday just Next one, open channel analysis. no, not this, not this. We can get from NSE website now. No, that is I opened that. Okay, carry on, don't worry. Okay, chalo. One minute. Is it in the next tab? Is there? Okay. Yeah, this is there. Yeah, this is there. So we can get the open interest from the NSE website, option chain, as well as the OIS spot. So mostly we are thinking that open interest we can use it for only F1O, but it is not there. It will give a dynamic levels of cash sector also, because in open interest mostly who is taking the option chain is mainly the sellers, even the buyers not even seeing the option charts, option data. They will go only for who is doing sellers mainly concentrating. But in a cash sector also, the levels, even now when we are using, for example, the moving averages, the moving average is giving the levels. Likewise, dynamic level is taken, we can consider for a trading purposes or a positional purposes from the option chart. So we can get it these websites, NSE OIS experts and NSE option chains. So now open analysis will option chart. Option chain, as I told, we are getting from this NSE website. We can pull the data for our various sources of programs. So here, simply all the data are raw data. These data sometimes we need to do the calculations. We need some calculation. We need to interpret for our purposes where the high accumulation is simply where, for example, now the open interest is the accumulation is here 36,000. The accumulation is here. How much the rate of change is going on? How the volume is increasing? How it will change the direction of the trade? So this is simply projected on the tool. It was created by Mr. Magendran. Mr. Maki is a humble trader. He is a individual trader. He have experience in various fields. Even he have given a seminar, Traders Google in 2021 conference. We created a Excel, and now we will just go through the Excel. This Excel mainly will work on Excel 2016 and above, and fantastically working on 2019, but I am using only 2016.
It's visible. Yeah, visible. Okay. Here, I just given link, and it is not. If it is not working, we'll spread in the group. The data, everything will be full. If you are opening in your system when the NSE website open first time, after that it will be saved within that. It will refresh. You just click a refresh. 9:16 it will start. Once it is uploaded, every time you have to refresh it. The bottom tabs are not visible on Excel. What is not visible? Which is not visible? The bottom tabs of Excel sheet. There are multiple tabs on the Excel sheet. How so you will explain one by one? Just hold on. No. Oh, bottoms are not visible. Okay. I will. No, it is visible to me. It is visible in my laptop. Oh, maybe the screen problem. No, there is no issue. Maybe it's visible. Okay. Now once we refresh it. But Mile, you can even you can even add this refresh also every 10 seconds. You can have the setting in the Excel file where you can put a small setting by which this sheet will be auto refresh every 1 minute or half a minute. That also you can do it. So no need to refresh every time. Okay, this is not done. Maybe we will do it later. Yeah. So that can be further improved. Okay. Carry on. Now manually. But even sometimes it is doing that. Once it is refreshing, it will take data. If it is any problem, first time you run all the macros, it will run it. It will take all the data. Okay. Let it finish. There is a problem in automating that. Okay. Now the NSE is closed, so we are not getting the update. But anyhow, the data are updated on Friday. So as per the Friday data, we will just go through this. We no need to put any change the values, anything, and it will update. Maybe if it is the data is not equal to our trading view or the broker data, it may be a problem from loading from NSE or an internet problem from your system. So both, if it is corrected, there is no problem. Everything will be a perfect. So here what Mr. Mahendran did in this tool, he pulled all the data. So with this data mainly from here, the open interest to this open interest is available in the NSE website. So this data will be there stored. And while we are working, we no need to see all the strike prices, because some strike prices will move, some strike prices will, for strike prices it will not be active, so it will not give a proper data for our trading purposes. So from the main data, we considered 15 strikes above and below. These 15 strikes mainly give a good result for a day trading purposes. For example, this ATM will be automatically updated, and from there above 15 strikes and below 15 strikes. As I told earlier, these complete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 12, 13 columns are updated from the NSE website. Apart from this, how these OI changes, how it is happening, how much percentage is happening, it will give the good idea for us to take a position or to keep a position in a day trading. Sometimes we can accumulate the position for a positional, even weekly positional or a BTST. For example, if you are taking here,
it will consider the wherever the maximum open interest is occur. Based on the day maximum open interest, the other percentages are coming. So mainly how it will help this chart, this Excel will give support resistance for us. For example, now the spot price is 36.8018 and the supports are here. So now everybody knows when doing this bank Nifty, mostly this 500 strike price is major support. But even though some minor supports will be there, that we can identify in the tool. We can identify in this tool that wherever the minor accumulations are going on, wherever they are exiting. So the percentage change in open interest and the percentage change in open interest on daily basis and the total open interest will give a good idea. Along with that, when the open interest is increasing, if the volume is increasing, it is an additional data for us to keep the position or to accumulate the position or to leave the position. So this type of data are there. For example, here the directions changing. When the directions are changing, it is making a fear for writers. So when the writers are exiting, it is an indication. Even it is not the strike of 500 round strikes. It's a middle strikes. They are they are exiting. So it will give the clue that they are going to exit. The market is going to turn. So small indications and based on the major accumulations will give an idea to keep our position or even small scalping. Take our position, keep it 10-15 points and exit. Audible? Hello? I'm right. Okay. Yeah, audible. And further from this, here we are getting all the data, open interest, change in open interest, volume. So here is the volume change percentage also giving that. So when we are going for the NSE website, the voice part, it will give the data, it will give the details, the rise in OI and the rise in price, the rise in OI and slide in price, slide in OI and slide in price, and slide in OI and rise in price. I think most of them know this. If it is not there, I will give a small explanations. When the price is increasing, the first rise in OI and rise in price. This is when the price is increasing. When the open interest is increasing, the price also increasing. It is indicating that we are using the term in a trading colloquially. It's a long. It's a Long built up. Long build up. It is a long build up. And when the OA is rising, but the price are sliding, it is called the short coverage. Short built up. Short built up. Short build up. And when the OA is decreasing, sliding, and the price is sliding, both are reducing, it is called as I think short coverage. Long liquidation. When the OA is reducing, long unwinding. Long liquidation or long unwinding. And when the price is OA is reducing, price Short is covering. It is Short covering. Short coverage. short coverage. It indicates short covering. Right. These four factors, these four strategies were added with the Excel sheet, and each and every strike prices where the short buildup is going on, where the long buildup is going on, where the liquidation is going on. Based on that, what is the trend? Based on that, what is the trend?
So this trend will give us good idea. Even when we are, this is actually a closed market. So we cannot go for a detailed thing. In a live market, we know that few people are bullish and other people are bearish. So this is the point. It is the break. We will go for, the direction will be changed. Accordingly, we can move it. So this is a simple tool, but we need a more learning. Who are experienced this open interest and option data can easily use. Otherwise, you have to little concept, do the little concentration, study maximum of 1 week or 10 days, and you can also be expert to doing the trade based on this. Normally, for my concern, I will not only take the data based on this open interest, because I will consider so many factors, so many things, even some indicators, some tools like market profile, where the orders are going there, where they are bunching the huge order, and how the direction will be changed. What is the commitment of traders? So many things are going there. Even I am doing the research on big trading, where the big trading is coming there. When the big trading is a good concept, even now mostly in India, nobody is doing that. Where the punching order is coming there, that is a heavy protection, like recently the zeal bit. So we can identify that that is the biggest resistance. From there we can move it. Apart from this, I can follow this market profile also. It will give an idea for the change in direction, where the accumulations are there, there is no fighting between the buyers and sellers. For example, this is a location where there is no fighting between the buyers and sellers. So this will act as a good resistance. So before, like that, when the market is coming down here, definitely there will be a rejection will be there. So when the market is coming there, I will go for the order flow. 1 minute. I will go for the order flow. I will check it, the punching, how much buyers or sellers are coming there, based on also, as well as where the open interest giving the direction, everything. Not only this, I will use some indicators also. So where can we see, Mail, this two chart? What you just shown it? 1 minute. 1 minute. No, one is this Excel sheet. The Excel sheet we can visit as per the link given by you. But the other two, this market profile and the volume profile, how we can see and where we will see? 1 minute. 1 minute. Okay. So actually, this market profile will work mainly now in a NinjaTrader. NinjaTrader is a software. For this, in India now we are having market profile software from MZ Pack, Bell Trade, and GOM traders, and some other abroad traders also there. We have to get the data from for this. It's a level 1 data needed. The level 1 data is provided by data providers, True Data, and some other, and two, three data providers are there. They are giving the data for this market profile. And now, addition with this market profile, there will be another software tool is there in everybody knows, Bookmap. This Bookmap is not in India; it is in only abroad. Now it is going to be launched in India, and it is required a level 2 data. Level 2 data still not available in India, so it is not launched. Maybe within a 1 month, True Data is launching the Bookmap. It will give more details about things. This order flow also working in this is order flow. This is order flow, and this is a market profile. This market profile also working NinjaTrader, and also Ami Broker there is a available. For Ami Broker, we need the data either from the True Data or Ami Feed. We can get the data. But if we are using in a NinjaTrader, we have the data from the True Data and the other one more data providers. There are 3 data providers in India giving this
tick data. It is called as tick data. Every tick, it will give the data. This structure will be formed. Sir? So that is, sir. Yeah. Anything, sir, about and Yeah. So we have to subscribe to your Ninja Trader or something like that for this two. Yes, sir. Actually, we have to buy a Ninja Trader. Then we have to buy a MZ back or Bell DPO, and we have to do these are all lifetime subscription. Acha, these are not available in the trading view. No. Acha. No. This Ninja Trader and the what is called MZ pack or Bell TPO, everything is a yearly lifetime subscription. But the true data is available monthly basis. It's only a data provider. They will change it. These are the softwares. This Ninja Trader software. If you have a AMI broker, you can get this what is called market profile. Market profile, we can get the cheapest data of AMI feed because market profile need only 1 minute data, but a Ninja Trader need a tick data. So 1 minute data AMI feed is providing, and for a market profile there is a 50 chart. There is a Chennai based website is there. They are providing a 50 chart. Their market profile is available. That will normally cost per month, including data and their subscription, 950 rupees. But when we purchase the Ninja Trader will cost around 80 to 1 lakh, and the Bell TPO will cost around 75,000, and the data will cost 1,500 including the monthly 1,500 including the tax. No, they're too expensive. Okay, we'll see. Acha, now you want to explain about OI Trader also? And for your information, we have crackers. We cracked it. So 20% of people in India using, not 20%, 75% people in India are using this Ninja Trader cracked version. The cracked version, huh? So that you can give the link to us now. So we will install Ninja Trader cracked version. We will discuss it later. Yeah, I will discuss. Acha, the OI Pulse, you want to discuss something? OI Pulse? OI Pulse is, I will do. We will discuss because OI Pulse, we can, what is the benefit of OI Pulse? Now this Mahendran tool, Mr. Mahendran tool is very good for Bank Nifty purposes and Nifty purposes. Okay, so what we will do now? No need to, because the retailers no need to pay a subscription and get that. If they want, apart from this for FNOs, other stocks, we can go that. We will give a detailed review another 1 week or 2 weeks later, and give half an hour, 1 hour for that. But anyhow, I have given a link of this OI Pulse. There is all people get to the manual, they have to register it. Let all participants register and download and let them read it before our introduction. Sorry, our webinar. So they can easily understand. Even after 2 weeks, they can interact more with me. Okay. Now come back to the tool, that Excel file. Come back to that. 1 minute, sir. I think our creator, Mr. Mahendran, is now in our webinar. We will ask. We will check. I will check once. Acha, he's there already. He's there in the webinar. Once I will check it. Yeah. Mr. Mahendran, are you there? Yeah, I'm here. Mr. Mahendran, good morning. So, so we'll request you to just introduce about this tool for maybe in 5 minutes, 10 minutes, if you want. Yeah. Actually, this is a very simple tool. But, it has taken some effort from my side to understanding how option chain works and other aspects. So right now, I'm not able to see the bottom part of the screen. No, but we are able to see. Okay, maybe I have to hide something. Acha, Mr. Mahendran, can you develop this Excel file even for stock also? No. You can develop, but I'm not interested in that one. I'm basically not a developer thing. Okay. So this tool also came. If you allow me, I'll just share my screen and then show. Explain about it. Okay. I will make you. Please do it. Yeah. I will make you co-host. Just 1 minute. Yeah. I made you co-host now, so you can share your screen. So, Mr. Mail, you can close your this screen and then yes, let Mr. Mahendran. I will stop it. Yeah. Let Mr. Mahendran start.
Done. Yeah. You are able to see the screen? Yeah, yeah. The blank screen coming right now. This is coming now. Yeah, correct. Okay. PPT you are able to see? Yeah, we can say. See, what happened was nearly a year ago, I developed this Excel. Your voice is very slow. Can you come Yeah. little nearer to the mic? Something like Yeah. Yeah. Nearly a year ago, I have developed this tool. So along with Hmm. that Excel, I have prepared this presentation. Are you able to see the presentation? Yeah, we can see. We can see. Yeah, so this is around 10 slides presentation explaining how to use the tool. So first slide is explaining that the tool is not for commercial purpose strictly. Because I know as a seeker, there are many people who cheat you and take your money. So I don't Right, want anything like that to happen for any retailers. So I have put some effort and I got this, I was able to get it working by following some videos on the YouTube. The main feature of this tool, I would say, the post processing. Your voice is very low. That is what the message coming from members. Can you slightly speak loudly or yeah. And make this presentation in the presentation mode. Then the full screen will come. Yes. Is it audible now? Slightly better. ठीक है चलिए. Okay. In presentation mode. Yeah. Now it is very visible. Yeah, I have shared this presentation and Excel to Mail, so we will be sharing later. So the moment you open the first sheet is input details. Here, if you are having 2019, I think 2016 or advanced version, you will get this queries and communication. So here, explanation is there about what to see and how to see. Okay. Once you refresh it, it will show that so many lines are loaded. Right, so many rows are loaded, so that means it is working. If it is not loaded, it will show a warning symbol over here. Okay. And the next slide, sometimes you will have problem with refreshing. So you may be required to click this one or NSC COM or API or indices this thing and try it so that it works. So the problem, as you said in the beginning, like we can automate. Yes, we can automate, but what happens is NSE and the big money does not want retailer to get data. That is for sure. So what they do is the server does not respond if you are trying to access data multiple times, which may happen if you put 1 minute or 5 minutes automatic. So in that case, what happens is if you are not getting data, you will not have the proper flow of how activity is going on. So that is the reason why every 10 minutes, 15 minutes, as per your kind of trade, you may click the refresh and click the run all macros. Okay. So what happens when refresh is these numbers will be changing mostly because very rarely I have seen these numbers not changing. Right. Because both Nifty and Bank Nifty are dynamic only. So within 5-10 minutes they change. Then once you click run all macros, corresponding sheets will be updated. Data, whatever is presented is recorded. So that will be helping you to do end of day analysis or analysis at say 2 o'clock or 2:30 or 3 o'clock to understand what direction market has taken throughout the day and how big money has built its position or what is their intention kind of thing. Okay. Then this is the main sheet only. So this is the warning symbol it shows sometimes. Download did not complete. So what you have to do is do it once again. Once again, click on the refresh. Ensure that both these sheets, because we deal only with Nifty and Bank Nifty. So this error should not be there. Once this is showing some rows loaded, that means the data is recorded at that time. Whatever is available in NSC. So this Excel sheet has multiple sheets. First is NIF, where you have kindly printing of data. That is what, every 15 minutes, as you click the macro, run all macro, it will record the data for Nifty, for Bank Nifty. The Nifty 15 OC is option chain of 15 strikes above ATM and below ATM. Similarly, you have Bank Nifty OC sheet, then Nifty full OC sheet, Bank Nifty full OC sheet. And where the data is getting extracted is NSE data is getting extracted at raw Nifty data and raw Bank Nifty data sheets.
So from here we pull it data into Nifty full and Bank Nifty full OC, and from there data is pulled into Nifty 15 OC and Bank Nifty 15 OC. So here, this is I have only explained for Nifty. Same thing is applicable for Bank Nifty. So every 15 minutes, once you click the run all macros, what happens is, if you see here carefully, this is on 7th January 21, 5:52 data has been added. Okay, corresponding to like whatever is the first 7th January expired. So before it has recorded like on 7th January at 12:30, I have recorded the data. Then at 5:52, I have recorded the data. Like during the day, how many times you click on run macros, it will record data for Nifty and Bank Nifty, ATM plus and minus 15 strikes. What the purpose of this sheet is, you can click on the filter of the strike price which you are interested in, just to see how the option open interest has changed, right? Based on the change in open interest, you have to interpret what was the intention of the big players on the movement of the market, right? Then, as Mile has explained, I have taken 15 strikes. So this gray column to the gray column is the data coming from NSE. And additional these things, like in this case, if you see, call writers are exiting. I mean, I would not say call writers, but all OI is decreasing. Usually when OIs are decreasing, that means we can presume writers are escaping. So what do you mean writers are escaping? Writers are escaping only because they are afraid their position will become in the money, they may incur loss. So if you go back to the old data of that particular time, you may be seeing like they were very much afraid, and you see so huge escape at this particular strike, 14,500. So Nifty made a big up move probably on that time. Also, sometimes the interpretation will be different. Like usually on the expiry day, also people will be exiting. That does not mean the market will make a big move that side. But probably they have eaten the premium enough and they are satisfied with whatever the premium they have eaten, and they just want to exit the position safely. That is the interpretation which one has to observe and make to be able to use this tool efficiently. And next is Nifty full OC option chain. Sometimes what happens is for some particular strikes, you may not get the data. So it may create a problem. So people who know Excel should be able to make a small adjustment of if they want to remove the row, they have to remove the row and then make the pulling of data. So that should be a simple task for people who know how to work on Excel. Like dragging of the rows, if it is required, they have to do. So this is an example of how rows have to be dragged. Anyway, you can have any number of strikes, but if data over here is not correct, you may not get a proper put call ratio also. Because in this sheet, I provide the put call ratio also. Yeah. This is the explanation about the presentation and Excel. I will explain on the Excel sheet. Are you able to see the Excel sheet now? Yeah, we can. So this is the sheet. This is on 25th January. 4:30 data was recorded. Before that, data was recorded at 350 also data was recorded. So what happens is, suppose you are looking for any particular strike, which may be the ATM or any, in case of Nifty, multiple of 100, in case of Bank Nifty, multiple of 500, because those are the most liquid strikes. You can understand what is happening to the data, right? This is same thing for the Bank Nifty, this is for Nifty. And yeah, one more thing is, usually it explains where high positions are standing. Are you able to see this histogram?
Yeah, we can. 100%. This is maximum OI. If you are plainly looking at NSE option chain, you'll be confused with only those numbers, like how many numbers are there, right? But if you are looking this one, you know there are no big OI standing in the money, but big OIs are standing at ATM and OTM, right? And here, if you see, they have exited because you see it is purely bullish, right? So the movement was bullish for puts. That means market is going down. So once market is going down, put traders aggressively exit their positions, and call traders add their positions. Right? So this was an indication. This is an old data sheet because right now I'm having a 2010 Excel. So 2016 or advanced version will be able to extract the power query. And in this sheet, you have the strategy which explains what is what. Right. So when price change is decreasing and OI decreasing, it's long liquidation, which is bearish. So for call, this is a 4 possibilities, which are these are the things available in the 15 OC chart here. This particular. So this is my explanation of the sheet. So here you can see what is the put call ratio also, this one in Q3 cell. And this is the time at which the data is there. So right now it's 11:41. So 11:43. That is the data because I am not refreshed. Yeah. Any queries on this? Yeah, Kotarich. Any query? Hello. Okay, yeah. And I request participants, if you want to ask questions regarding the tool, I think Magendran will resolve it now. So friends, if you have any question on this strategy and how to use this Excel file, you can ask the questions from Mr. Mahendran as well as Mr. Mahil. Unmute yourself and then ask question. So everything is clear to everybody, I think. It looks like that, or they have to see the file and then they will ask the otherwise nobody is understand. Mahendran ji. Yes. Mahendran ji, can you hear me? Yes, yes. Sir, why are these 5 consecutive strike prices selected from both the sides? Then 2 is white, again 1 is green, again 2 is white, 1 is green. What is the meaning of that? See, this tool I have developed it for my advantage, where I can easily see how many 5 strikes away and 5 strikes below, and what is the ATM that is highlighted clearly in red, right? So there is no doubt. Whenever I want to know what is the ATM, it is 17,350 at that time, right? Yeah. And if I want to take symmetrical position, right? So I have maintained green color for the Nifty. Say like from here 1, 2, 3, 4, 5 strikes up and 5 strikes down. So this is the way I can understand. Okay, immediately I can see how much these many strikes in the money is what is the premium going on, how many strikes in the money, whether the price matching is there properly and other parameters. Okay. So you taken 5 strike above, 5 strike below as a green color. Yeah, that is only for my understanding and the visibility, better visibility. Easily, yeah. See, otherwise it will be difficult for me to know if 17,000 is so many strikes price, how many will be it on the other side. Right. So what is it? Immediately I will know. Okay, 17,000. Complementary is 17,700. Right. So, so these values are not depending on the ATM or OTM. It is just for basically to understand better. Okay, clear. No. As for the ATM. ATM, but it will not indicate bullish or bearishness. By watching only this 10 column, by watching only this 10 value,
It is basically for better visibility what you have put as the color. Okay. See, Clear. if spot goes up, this Ah. 38,500 will increase to 38,700, 800, 900, Ah. whatever it is. So Ah. accordingly, these values also will change. Right? And Clear. for the bank Nifty, I have made it blue color, and for Nifty, I have made it as green color. Rest all are same. So sometimes there is no confusion. You may be confused with, sometimes you open Nifty and you forget to see. You will be sticking to some strike price. You will be thinking, in the money it is 231. 3 strikes in the money is 231. Suddenly, how it become 596, 521. You should get used to the color code also. Okay. Actually, This sir, one more basically- thing. Yeah. Sir, you have calculated the LTP. Okay. It Yes. would have been better if you could calculate the actual time value also of that strike price. Yeah, you can. Actually, I have it in my personal sheet. So that Because people will come to know this is the time value, this is the erosion that can happen to this strike. See, once you get used to the market, nobody need not explain how. See, very simple thing for Bank Nifty 1, 2, 3, 4, 5. So 500 is the intrinsic value, and 160 is the time value. Yeah, that's what I'm saying. If that could be done on a side column, wherever after K column or after your W column, it would give you a benefit. It's there in my personal sheet. That would be a beneficial to the person who is taking a position. This is the time value that is going to give. Yeah, what if somebody is interested to do that, they can add a sheet, extra sheet, so they can get a value of this and get a value of this in that sheet, and put additional. Yeah, you have to add one more cell. That's one all. more cell, one more Yeah, cell. fine. But see, but these cells are structured and fixed, finalized in my thing. So if somebody wants to do additional things, they can make a change in that. But it will be up to them how they will manage. But as far as I have seen, these are pretty much formatted and not required to tweak much. Okay, sir. Majority data, whether you check it for IV, LTP is what comes from NSE, IV comes from NSE, is available. And one small drawback here is the data what we get NSE itself is delayed by around 3 minutes or so. So if your interval of recording the data is somewhere mismatching, then maximum delay is around 6 minutes. But that should not create a problem for people who are taking the positional trade. Okay. Mr. Roshan, you have some question? Roshan? Yes, sir. What is that? This you go to the Nifty 50 that there go to the column AN. Yeah, it is there over here. The time values are there. Okay. So it is there for Nifty, but Bank Nifty is not there. Bank Nifty is not there. Yeah, it is not there. One can replicate it. No. Sir, I have one question. So, what value we are taking from NSE? Is it only the LTP, and then all the calculation is done on this sheet? I mean, the live in terms of the live. See, what data we are taking. what data we are taking from NSE is this much. The highlighted one. From OI of call to OI of put. Okay. So if we are able to pull this data from Nest or any other terminal, I mean, by linking the Excel to it, then it will become more dynamic. Yes, very dynamic. Fully real time. Yeah. Very Okay. real time. All right. वो आपका प्रोजेक्ट है that I have already done in ODN, sir. Yeah. It's very easy. It's just linking, right clicking and linking, so it can be done. Yeah, it's very easy. ODN हमारे पास नहीं है ना. नहीं, ODN मतलब जहाँ पे भी आप Excel में पुल कर सकते हो वहाँ कर सकते हो. Any software, right. Like Nest is very good one, or any other like Dart software. Option आपको प्रॉब्लम एक ही आता है. फिनमिशन में बताओ उसमें हो सकता है. स्ट्राइक प्राइसेस चेंज करने पड़ते हैं बार-बार.
अच्छा, क्योंकि आप कितने स्क्राइब शेप्स को मार्केट वॉच में ऐड करोगे, राइट। वही एक प्रॉब्लम है उसके अंदर। मार्केट जब 800 पॉइंट मूव किया, नेक्स्ट डे आपका पूरा मार्केट वॉच में आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, वो जो लिंक करते हैं उसके लिए। हाँ, क्योंकि अच्छा, स्ट्राइक अच्छा। प्राइस चेंज हो जाएगा ना, एट द मनी चेंज हो जाएगा ना। हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिक निकाल दे रहे हैं एटीएम इनका नहीं, इनका वो इस। यहाँ पे निकालेगा क्योंकि इन्होंने पूरा रॉ डाटा लिया हुआ है बाहर से, अच्छा, 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 अच्छा। और तो वहां मैं से फिर वो। उन्होंने कंडीशन फॉर्मेटिंग डाला है 0 to 15, 0 to 15, वहां से वो हम्म, पुल कर रहा है एट द मनी को। हम्म, अच्छा, ओके। वो रॉ डाटा में उनका पूरा एनएससी का पूरा ऑप्शन चेन है। तो अगर ये आपका रॉ डेटा में अगर हम स्टॉक का डेटा ले लें तो भी स्टॉक का भी काम करेगा ना फिर तो ये। स्टॉक का भी काम करेगा, स्टॉक लेकिन फिर का उसके लिए काम आपको फिर उसका एक एक घंटे में इनका ये चेंज करते हैं एनएससी वाले, अच्छा, वो कुकी चेंज कर देते हैं, कुकी कुकी चेंज को। करते हैं। जितना आप प्रॉब्लम। हर बार पूछोगे तो वो कुकी हाँ, चेंज करेगा, आपको फिर डाटा मिलना बंद हो जाएगा। राइट, 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 वो एक प्रॉब्लम है। नहीं, उसका भी कोई सोल्यूशन है मेरे ख्याल से, किसी ने बनाया है उसका एनएससी भी से डाटा सोल्यूशन। पैसा पूरा दे के पैसा ले लो। नहीं, 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 वो किसी ने एक सोल्यूशन। कोठारी जी एंड पीताम्बरन जी, ये मैंने करीब 6-7 महीने से सेम कुकिंग पे मैं यूज कर रहा हूँ मेरा पर्सनल शीट में। अब तक अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब वो आप बता cooking- रहे हो ना, आप बहुत कम बार रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, बार बार नहीं कर रहे हो। नहीं, आप बार बार भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, आपको हर बार जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हाँ। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको डेटा अपलोड हुआ है, हम्म, मतलब डेटा लोड हुआ है। हम्म, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अंधेरे अंधेरे में तीर मारोगे और बोलोगे कि मेरा तीर लग गया, नहीं हम्म, होगा ऐसा। हम्म, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो लोड हुआ है या नहीं। तो आप हर 1 मिनट पे आप कर सकते हैं ये, हम्म, बट आप सिर्फ वो अपडेट करते ही रहेंगे, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बराबर। सो इसीलिए क्या है, आपको सिर्फ वो जो 15 मिनट एक नॉमिनल है, आप हर आधे घंटे पे क्या है ना, आपके पास अगर वीकली एक्सपायरी का डेटा अगर है आपके साथ में, तो आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मूवमेंट क्या हो रहा है। मतलब अभी क्या है, वो एक ड्रॉबैक है कि मूवमेंट पहले हो जाता है ऑप्शन में और बाद में आपको दिखता है चार्ट पे, एंड देन नाउ द डेटा इज वेरी डायनामिक। अभी जो डिलेड डेटा है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाकी सब तो somebody wants to know how it works, it should be a easy tool to explain how you should check what is happening. So, sir, with this all this data, this OI data and this trend which is telling us bullish or bearish, and where the short build-up is happening or long unwinding is happening and all that. So how do you take trades based on this information? What kind of trades you take? See, as of now, I'm not trading much because of some other problem. But right now, what I am observing, the market is moving overnight. The overnight also, even if you have this data, suddenly there is a gap up or gap down. So this red or green color is forming, and it is staying like that during the day. So it is difficult to come to a conclusion of what is happening. Right. But one indication is this direction. Once you get a complete direction is Guys, given. someone is not speaking and a lot of background noise is coming. If you're not speaking, please go on mute. கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்களேன் சார். இல்ல சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த இது மட்டும் இருக்கட்டும் வேண்டாம். See, right now we are finding one alignment that is all the puts are bullish. So that means direction is clear around this set. You can go with a call sell, ATM call sell, or maybe in the money call sell. While yes, sir, please carry on. Yeah. So this is one way of knowing the direction.
we filter then we can see OI list or something like that, और वरना वो काम नहीं करेगा. ये just पूछना था मुझसे. Yeah, Roshan ji, फिर से पूछेंगे. In this Excel sheet, if we put a filter on row number 5, ठीक है, and then largest to smallest या smallest to largest वाला data हमें करना हो, देखना हो, so can we do that? Maybe instructive value or maybe OI और कुछ भी जो data हमें देखना है तो. See, यहाँ पे जो है डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं NIF शीट और BM शीट Okay. में. तो आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिग्नल अगर लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्या हो रहा है. मतलब मैंने ये एग्जांपल दिया क्योंकि ये चारों उस टाइम का है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग का डेटा सेम लग रहा है. बट हाँ, ड्यूरिंग द मार्केट ये क्या होगा, कैसे चेंज हो रहा है आपको पता चलेगा. OI कितना चेंज हो रहा है, OI एंड OI चेंज कितना है, whether people are exiting or adding, you will be knowing. So based on that, you can understand what is happening at different strike prices. So based Right. on that, you can understand where the market is being moved. But Right. always, like, once you analyze, again you have to go and make a selector, because this may create a problem in recording the data. So if you run on your approach. Okay. It runs And sir, the ये market. थोड़ा right now it is showing that 17,350 some Nifty levels. जबकि actual level is 17,100. This is an old data now, because this is 2010 Excel. This doesn't have the Power Query option. Okay. This is an older version. So if your data, if you click, it has connection. If it is a latest version, it will have query and connection. And so Okay. in this sheet, if you see, Fine. here, in the latest version, you have queries and connection. So that comes on the right side. ठीक. Sure. Who is having an advanced version of Excel, they will be able to click the refresh. First thing is they have to open this connection, then click on refresh. They will find how many rows are loaded. If it shows the rows are loaded, then that means it is working. It has recorded when you click the refresh, and then click on the run all macros. Okay. Sure. Thank you. I've shared the link of this Excel file as well as PowerPoint file. You can download from that link. ये महेंद्र जी आपका ये PowerPoint फाइल भी शेयर किया है? Yes, yes. PowerPoint as well as the Excel is there in अच्छा. Google Drive. नहीं ये वाला PowerPoint फाइल जो है इनका महेंद्र जी का है वो भी शेयर किया है? Yes, there in the Google Drive. Okay, very good. Any other question from any member? प्रदीप जी, मेरा नाम महेंद्र नहीं, महेंद्र है. Yeah, sorry, what? महेंद्र नहीं, महेंद्र है. महेंद्रा है. अच्छा. आपका मोबाइल नंबर क्या है सर? I will give sir. Okay. Thank you. So any question from any participant? Or we'll end otherwise this presentation. Sir, all these technicalities you understood, all the operations, how it happens. For a beginner, for an example, I am a beginner. So वहाँ पे what is the strategy to be used initially so that we can start practicing, and then slowly and gradually we can have a confidence on the strategies. You have to learn only. That is the only thing. You have to try various strategies, and then you can see my earlier webinar. We have discussed various strategies. So watch those Zoom recordings. Then you will come to know various strategies on the covered call, cash secured put, short strangle, everything we have discussed. All these are available in this Zoom webinar, that YouTube channel.
Channel name is PK Kothari. Okay, great. So just go there and then you can Sure. watch all the screens. So then you will come to know. Sure. Okay, Thank you. Okay. So if there is no more question on this thing, we'll end this presentation, and then we'll start our Q&A on the algo. I once again give thanks to Yeah, Mr. Priyankan for the support to this webinar. Yeah. Thank you, Mr. Mahendra and Mr. Mail. Thanks a lot for all this thing, and we look forward for your other presentation on the OI Pulse. Sure, we do very shortly. look at the profile order flow, everybody in everything in the future. Thank you. Thank you. Yeah. Thanks a lot, Mahendra ji and Payal. Yeah, thank you, sir. Mail. Thank you Thanks for a the lot. opportunity. Yeah. Thank you. Okay. So any other point you want to discuss? Anything now? On Algo Trader, or any strategy or any of your experience you want to share, whether it's working perfectly for you, how much money you are able to generate, all those things. Or you don't want to share how much you are earning, huh? Should I take that as a feedback? Kothari ji, Huh? I have shared one presentation in one of the groups where Mail is linked. So Okay. I'll ask Mail to just forward that Google Drive, which is available. So one can download the file. Yeah. It is basic level marking on a chart. Okay. So I think for beginners, it will be of good help to be able to take a decision. So you can send it by WhatsApp to me. My number is 99201. 99201. I'll ask Mail for your number. Yeah. Okay. Mail, just forward me this number. Or I'm just posting in the chat also my number. You can send me directly also there if you want. This is my number. I've just shared. Huh? Okay. Then I'll share to everybody. Okay. और किसी का कुछ फीडबैक? एनीथिंग? अभय कुमार जी, you are also Alok Saha, Patil, Sunil Malhotra ji, all you are using algos. Any issue, any problem? उसमें सर जो हमने एक बार बात किया था ना स्टॉप लॉस का, जो उसमें एल्गोरिथम में, लेकिन वो उसमें ट्रिगर नहीं होता है। मैंने उसमें पोजीशन भी नहीं थी हमारी पुरानी, लेकिन मैंने 2500 का लिखा था स्टॉप। अभी वो मेरे पास वो पोजीशन नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन बॉदर नहीं किया। देन आई मैन्युअली स्क्वायर्ड ऑफ करके मैं बाहर निकल गया था उस पोजीशन से। लेकिन वो पाटिल जी क्या हो रहा है, वो पाटिल जी क्या हुआ है कि एल्गो में और जो हम एक्चुअल में जो देखते हैं ना, जो हमारा स्क्रीन पे आता है पीएनएल, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है ये। जो एल्गो जो इनका मैनुअल जो कैलकुलेट कर रहा है, वो क्या करता है कि एक होता है आपका बुक्ड प्रॉफिट और एक होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो जो बुक प्रॉफिट जो आपका ऑलरेडी, जैसे आपने करेंसी में चालू किया, अब करेंसी में आप मॉर्निंग से ट्रेड चालू कर रहे हैं और आपके 10 ट्रेड आपके जो है वो स्क्वायर हो गए, तो आपने खरीद भी लिया और बेच भी लिए, तो वो आपका हो गया बुक प्रॉफिट, बुक पीएनएल हो गया। ठीक है, अभी जो आपकी ओपन पोजीशन है वो आपका है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उसमें आ रहा है वो। तो इसमें कुछ एक लॉजिक में कुछ इशू आ रहा है कि जो हमको स्क्रीन में जो हमको जो विजिबिलिटी में जो आ रहा, जो शून्य में दिख रहा है, वो एक्चुअल में एल्गो में कोई डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं ये लोग। तो उस पे मैं आरएनडी कर रहा हूं अभी मैं, वो मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर ये एग्जैक्टली वो निकाल देंगे कि ये अपना स्टॉक लॉस का फार्मूला कैसे ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके है ना, क्योंकि अगर आपने एक ही स्टॉक लिया, मान लो जैसे आपने मॉर्निंग में पोजीशन लिया कि आपने जो है जैसे यूपीएल का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया या कॉल लॉन्ग कर दी शॉर्ट, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपने ड्यूरिंग द डे 4-5 बार उसको मतलब आपने मतलब स्क्वायर कर दिया, खरीदा बेचा कर लिया, तो थोड़ा एल्गो में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है ना, तो एल्गो का प्रॉब्लम नहीं है, वो एल्गो का लॉजिक डिफरेंट ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा। तो उसमें मैं आरएनडी करके अभी 4-5 दिन के अंदर सॉल्यूशन बता देंगे कि क्या फार्मूला जो है उसमें होना चाहिए जिससे कि हमको एक्चुअल पीएनएल दिखे। अगर मान लो मेरे को एक्चुअल पीएनएल पता चल जाए कि हाँ भाई आज मैंने 10 बेचे हैं, 10 खरीदे हैं और 4 मेरे ओपन खड़े हुए हैं, तो इन सबका मेरा जो है कंबाइंड पोजीशन कितना आ जा रहा है, वो अगर मेरे को करेक्ट फिगर आ जाए एल्गो से, देन वी विल बी एबल टू मॉनिटर इट। तो वो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, 4-5 दिन में मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा। दूसरी एक बात थी, जैसा कि अभी हम जैसा कोई भी शेयर्स है, तो यू आर गोइंग टू एक्यूमुलेट ऑल दोस थिंग्स एंड देन यू आर प्लेइंग अराउंड इट, आइदर यू आर शॉर्टिंग और शॉर्टिंग द फ्यूचर, और उसको अब ये करते हैं ऑल दोस थिंग।
But is it necessary to accumulate the stock if we are ready to give the delivery, or if we are ready to pay the money, मतलब जो भी positions आएंगे at the end of the day, at the end of the month, तो is it necessary to accumulate all the stocks first? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, बल्कि ऑन द कंट्री जो आप जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा फायदा होने वाला है। हाँ, उसमें आप स्लोली करने के बजाय आप एंड ऑफ द मंथ में जाके करोगे तो आपको तो मतलब बहुत सारे मौके मिलेंगे ना। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने को वो जो है डे वन से ही अपना धड़कन बढ़ जाता है, अरे यार गिर रहा है, फ्यूचर गिर रहा है, फ्यूचर गिर रहा है, थोड़ा अक्यूमुलेट कर लो, थोड़ा वो कर लो। इफ यू हैव द रियल मतलब जो कहते हैं ना कि स्टील की अगर आपकी पावर है, स्टील पावर है, तो यू कैन वेट एंड देन दैट विल गिव मच मोर बेनिफिट, क्योंकि पूरे महीने में एक दो बार तो वो स्टॉक घूमेगा ही ना कभी ना कभी। Naturally, अभी जस्ट I tried from last 15-20 days in UPL, वो बराबर 795 से 795 से लेके 835 या 40 तक वो जाता है, फिर बीच में आता है, फिर ऊपर जाता है। तो I took some 3-4 rounds in that, but just I want to take your opinion this thing. नहीं, वो उसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे थोड़ा सा आप होल्ड करोगे तो ज्यादा पैसा आएगा। पर प्रॉब्लम वही होता है ना कि अपना टेंशन बढ़ जाता है, वो एक प्रॉब्लम है, तो वो एक दिक्कत है। यूपीएल तो जबरदस्त चल रहा है और यूपीएल का भी लॉन्ग टर्म टारगेट 950 का आ रहा है। करेक्ट है, वो क्या है कि we need to set our profit in our mind, then we can work it, otherwise वो प्रॉब्लम है। या नहीं, अगर आप पोजीशन लेने को तैयार हो कि यार अगर नीचे चला गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया पैसा मिलने वाला है। करेक्ट, क्योंकि वो ऑक्सीलेशन पे जाता है, नीचे आ जाता है, वो वापस ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। और इसी में नहीं है, सारे स्टॉक में यही हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑपरेटर जो फायदा करता है ना, ऑपरेटर जो हमको जो रिटेलर्स को खिलाता है, वो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसको पता है कि ये राउंड नंबर पे ये ट्रिगर होंगे। जैसे यूपीएल है, अब यूपीएल अगर 820 पे चल रहा है तो उसको पता है सब लोगों ने 800 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो, कैसे न कैसे करेगा, प्राइस को 795 पे लेके आएगा। जैसे वो 795 पे आया, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, सारे रिटेलर्स बाहर हो जाएंगे, फिर वहां से वो 795 से वापस 820 पे ले जाएगा। करेक्ट। दैट इज व्हाट नो ऑपरेटर्स आर डूइंग इट। सो अगर हम इस पोजीशन को अगर हम कंट्रोल कर ले कि तू 790 चला गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूं मैं, तब एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है आपको, तब बढ़िया पैसा बनाएगा। ये तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा साइकोलॉजी का गेम है ये। करेक्ट, थोड़ा साइकोलॉजी का गेम चलता है। तो वो थोड़ा अगर आपका हो गया तो वो तभी कर पाओगे जब आपका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। 20 स्टॉक में कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके 2-3 स्टॉक के अंदर है तब बढ़िया चलेगा ये, बढ़िया दो चार स्टॉक ही करो, लगे तो उसकी पोजीशन थोड़ी बढ़ा दो, मतलब उसके लिए बेस्ट ये कि पहले अपने सारे शेयर बेच दो। करेक्ट। और बेचने के बाद कैश खड़ा करके हो जाओ, भाई मेरे पास जो है कैश मेरे बैंक में पड़ा हुआ है। अभी आप ये वाले स्ट्रेटेजी पे आ जाओ कि नीचे जाएगा तो फिर मैं डिलीवरी ले लूंगा, और ऊपर जाएगा तो अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है ना। अभी आप जो है फ्यूचर शॉर्ट करते जाओ, क्योंकि कैश आपके पास पड़ा हुआ है। भाई आज आपने जैसे मान लो यूपीएल अपना 820 में बेच दिया है, अभी यूपीएल का अगर आपने 820 में बेच दिया है, और अगर आप 820 में अगर फ्यूचर अगर खरीदते हो तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और ऊपर जाएगा तो फिर मैं अपना डिलीवरी ले लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। बराबर। तो वो हिसाब से नहीं, ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट भरोगे, नीचे जाओगे तो डिलीवरी ले लोगे। तो ये सारा स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, और कैश आपके पास पड़ा हुआ है और 2-3 स्टॉक में काम कर रहे हो और बढ़िया पैसा आता है। उसमें इतना पैसा आता है कि जो आपके छोटे मोटे जो अपन करते रहते हैं ना, निफ्टी 20 में, और जरूरत ही नहीं है, वो जरूरत ही नहीं है करने का। मैंने पहले अल्गो लगा के मैंने 5-6 स्ट्रिप डाला था अलग, लेकिन जब मैंने देखा कि उसपे तो कुछ आता ही नहीं, फिर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई किया जो आप बताए जस्ट अभी फीचर्स वाला। नहीं, उसमें सब में आता, सब में है, आता सब में 500, 700, 1000 रुपए सब में आएगा। लेकिन इसमें ज्यादा वॉल्यूम आता है। इसमें ज्यादा आता है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क भी है, तो वो हिसाब से है ना, और उसमें ज्यादा कैपिटल भी जरूरत पड़े, तो ये डिपेंड करता है कि आपका आउटलुक क्या है। एग्जैक्टली। बट ये है कि मतलब अपने को अभी है ना वो मैनुअली ट्रेड नहीं डालने पड़ रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है ना, दैट इज ट्रू। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एल्गो इज दैट वन कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट द मैनुअल ऑर्डर, एंड वी कैन फोकस ऑन आवर स्ट्रेटेजी कि भाई मुझे लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना, वो सब अपन कर सकते हैं अपन, और कोई भी ट्रेड मिस नहीं होता है। वरना मैनुअली आप चले जाओगे तो आपके ऑर्डर्स, आपके जो ट्रेड मिस हो जाएंगे, क्योंकि वो तो मार्केट नीचे आके ऊपर चला गया पता भी नहीं चलेगा, और ये अपना एल्गो अपना करता रहता है सारा का सारा। करेक्ट। एडवांटेज। और किसी का कोई फीडबैक है? सर अभी जो आपने वाला पॉइंट बोला ना, फ्यूचर बाय करना और फ्यूचर सेल करना, तो उसमें जो भी डिलीवरी लेने वाला पॉइंट, तो ये मुझे क्यों सही लगता है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना डेडिकेट करूँ। नहीं, आपने क्या बोला फिर से? मैं इतना डेडिकेट कर पाऊँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्ट्रेटेजी
फ्यूचर का मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज कुछ प्रोफाइल वाले बंदों को काम लगती है. सो फॉर मी आई थिंक दिस स्ट्रेटेजी विल बी मोर बेनिफिट बिकॉज़ आई एम नॉट डेडिकेटेड टाइम कॉलिंग मार्केट ऑफ एक्चुअली ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल है. आफ्टर मार्केट जॉब. आपका आपका आवाज ठीक से नहीं है रोशन जी. ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया ना, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है. और मेरा जो प्रेजेंटेशन डाला है उसके अंदर मैंने एक स्लाइड आपकी यही वाली है जिसमें आप मैक्सिमम रिस्क ले रहे हैं वन लॉट लॉन्ग का. ठीक है, एक लॉट लॉन्ग का आप रिस्क लेने वाले हो मैक्सिमम. ओके, अभी उसके अंदर आप क्या करेंगे कि जो है इट विल एल्गो विल ऑलवेज बाय फर्स्ट. आपने एक लॉन्ग का आपने मॉर्निंग में अपना एल्गो चला दिया, आप ऑफिस चले गए और आपने कंडीशन ये डाल दिया है कि एल्गो पहले मेरा बाई करेगा. ठीक है, अब बाई करने के बाद में अगर वो शेयर ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट बुक कर देगा और फिर बाई करेगा, नीचे आएगा तब. तो ये पूरा दिन भर आपका ट्रेड करता रहेगा. दिन भर में हो सकता है आपको 30-40 हजार रुपए निकाल के दे देगा. अगर वो नीचे चला गया तो आप अपना डिलीवरी ले लेना, क्योंकि बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड टू टेक द डिलीवरी. और एक लॉट से ज्यादा वो करेगा नहीं, क्योंकि आपने मैक्सिमम जो क्वांटिटी डाला हुआ है वो एक लॉट डाला हुआ है. मैं वो स्लाइड दिखाऊं आपको? शुड आई शेयर द स्लाइड? हाँ जी, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ आपको. एक मिनट, एक मिनट. ये वाला था वन लॉट. हाँ, ये आपको आ रहा है ये वाला स्लाइड नजर? कैन यू सी द स्लाइड? ओके, तो इसमें जैसे यूपीएल में हमने लिया है और मेरा मैक्सिमम रिस्क में मान के चल रहा हूँ कि वन लॉट लॉन्ग. यानी कि मेरा जो रिस्क है वो ये है कि मैं एक लॉट लॉन्ग करने को तैयार हूं अगर मान लो मार्केट नीचे गिर गया तो. बराबर है, ठीक है. अभी मैंने सेटिंग मैंने क्या डाला है कि आई विल स्टार्ट विद द बाई फर्स्ट. मैंने साइड डाला, देखो बाई डाला है और ऑफसेट डाला है 5 रुपए का. मैंने बाई का ऑफसेट डाला है, 5 रुपए मैंने सेट का ऑफसेट डाला है. इसका मतलब ये है कि वो अपने को हर ट्रेड पे 5 रुपए का प्रॉफिट देगा. पहले बाई करेगा और जैसे ही 5 रुपए जाएगा वो सेल करेगा और सेल करने के बाद में वापस से बाई का ऑर्डर लगा देगा. देखिए अभी आपका देखो 780 रेट ट्रिगर हो गया. मॉर्निंग में आपने जो है 780 रेट पे आपने अपना आपका जो मॉर्निंग में आपके 2 ऑर्डर लगाएगा. ये नहीं, इसका एक स्लाइड पहले भी है क्या? एक सेकंड. नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट है. एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट है. देखिए इसमें रिस्क प्रोफाइल क्या है? मैक्सिमम वन लॉट लॉन्ग एज आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक. दिस इज द रिस्क आई एम टेकिंग एंड दिस इज माय व्यू कि आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक. My profit target is 6,500 and my stop loss is also 6,500 for each trade. So मैं lower circuit का प्राइस में क्या रखूंगा? बाई प्राइस माइनस बाई ऑफसेट माइनस 1 रुपए. नाउ दिस इज ए प्योर मैथमेटिक्स, मैंने पहले भी बताया हुआ है. ये स्पेसिफिकली मैंने फार्मूला बनाया है ये कि लोअर सर्किट आप क्या रखोगे? बाई प्राइस माइनस बाई ऑफसेट माइनस 1. दैट मीन 780 आपका बाई प्राइस है, 5 रुपए का ऑफसेट है और 1 रुपया उसमें कम करके आपको लोअर सर्किट रखना है 774 का. और अपर सर्किट आपको रखना है सेल प्राइस प्लस बाई ऑफसेट माइनस 1 दैट इज 780 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 784 का. ये आपको डालना है आपको लोअर सर्किट के अंदर. अपर सर्किट पे आपको ये रेट डाल देने का है. नाउ अभी एल्गो ट्रेडर क्या करेगा? इट विल प्लेस ऑर्डर्स इमीडिएटली ऑन स्टार्टिंग द एल्गो ट्रेडर. दैट इज फर्स्ट बाई ऑर्डर एट 780 माइनस 5 775. और ये सेल का ऑर्डर डालेगा नहीं क्योंकि आपने से बाई का डाला हुआ है. इससे कंडीशन इसमें हाँ, तो ओनली मॉर्निंग में पहला ऑर्डर जाएगा 775 का. ओके, अगर 775 का रेट ट्रिगर हो गया तो ये एक लॉट आपका फ्यूचर का बाई कर लेगा 775 पे और इट विल नॉट प्लेस अनदर बाई ऑर्डर क्योंकि आपने मैक्सिमम बाई क्वांटिटी आपने 1300 का डाला हुआ है. देख रहे हैं आप? मैक्स बाई 1300 एंड लॉट साइज आल्सो 1300. तो आपका ये एक ही लॉट को बाई करेगा. ठीक है, बट ये क्योंकि आपका ऑर्डर लॉन्ग हो गया है तो इट विल प्लेस अ सेल ऑर्डर ऑफ 775 प्लस 5. तो 780 का ये आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा. तो अभी आपको क्या हो जाएगा? तो अभी आपका 2 ऑर्डर आपके खड़े होते हैं. 775 में बाई हो गया था और 780 का आपका सेल ऑर्डर हो गया था. अभी 780 का अगर रेट ट्रिगर हो गया तो ये एक आपका फ्यूचर सेल कर देगा. तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1300 इंटू 5 रुपीज दैट 6500 का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया. और जैसे ही प्रॉफिट बुक किया ये आपको अनदर ये बाई ऑर्डर डालेगा 780 माइनस 5 का 775 का. और सेल ऑर्डर ये नहीं डालेगा क्योंकि अपर सर्किट आपने 770 784 का डाला हुआ है. तो आपका सेल ऑर्डर नहीं जाएगा, यानी कि आपका सिर्फ 775 का बाई ऑर्डर चला गया.
ठीक है, यही कंडीशन हमारी स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में भी मैंने पहला ऑर्डर 775 पे डाला था और अभी भी मेरा 775 पे ऑर्डर वापस आके खड़ा हो गया और मैंने 6500 का प्रॉफिट भी बुक कर लिया और मैं सेम ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया हूं मैं। करेक्ट, राइट। तो ये साइकिल आपकी दिन भर चलती रहेगी, आपकी दिन भर आपका ये साइकिल जो है चलता रहेगा। हर बार जैसे 5 रुपए ऊपर जाएगा आपको 6500 रुपए आएगा और एक दिन में 3 साइकिल 4 साइकिल अगर आपके यूपीएल के हो गए तो आपके इतने पैसे आपके जनरेट हो जाएंगे। और आपका कंडीशन क्या है कि अगर मान लो ये शेयर नीचे गिर गया तो इफ इट फॉल बिलो 775 द स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड। अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो, डिलीवरी लेने को तैयार हो, तो आपको ये भी जरूरत नहीं है। और प्रोटेक्शन अगर आपको लेना है देन यू एक एटीएम का या ओटीएम का पुट बाय कर लो या आप ओटीएम का कॉल सेल करके रख लो, इससे आपको पार्शियल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। What I will suggest is sell your shares, यूपीएल के या किसी के भी शेयर है उसको बेच दो, कीप द कैश इन बैंक। इफ द फ्यूचर गोज टू 780 ऊपर गया तो बुक प्रॉफिट इन ईच साइकिल, हर साइकिल में 6500 रुपए निकालते रहो। नीचे जाएगा तो डिलीवरी ले लेना क्योंकि आपने पहले से शेयर बेच के रखे हुए हैं, ठीक है ना। यू मस्ट बाय द फ्यूचर एटलीस्ट बिलो योर इक्विटी सेल प्राइस एंड यू मस्ट सेल, ये तो ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अगर आप ऑफिस भी जाने वाले हो मॉर्निंग में बस ये सेटिंग डाल के छोड़ दो एल्गो में, आपको 6500 के या आपने 2 रुपए का रखा या 3 रुपए का रखा, जो भी सेट ऑफ रखा है आपने, उसके आपसे कोई दिन भर आपको ये पैसा निकाल के एज ए वर्चुअल बैंक आपको निकाल के देता रहेगा। और आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो ये है कि मैं एक डिलीवरी लेने को तैयार हूँ अगर मान लो शेयर नीचे गिर गया तो। और वो आप मॉर्निंग में आप रेडी हो कि हाँ भाई मैं नीचे गया तो मैं डिलीवरी ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कि मैं शेयर बेच के बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कैश है तो मुझे कैश का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी से आप बढ़िया पैसा निकाल सकते हो। एंड एक और चीज इसमें, अगर हमें लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है तो फिर वो सेल वाला चालू करो, तो सेल वाला चालू करो। तो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए। तो उस वाले केस में मैं पहले सेल करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले सेल से चालू किया, पहले मैंने बाई से चालू किया था क्योंकि मैं बुलिश था। अभी मैं बियरिश हो गया हूँ, तो बियरिश होने के अंदर में +1 का फार्मूला लगाया मैंने। दिस इज अगेन स्पेशल फार्मूला है डिवाइस बाय मी, मैंने ये फार्मूला करके निकाला है। इसमें आपको +1 करके आपको एलसी और यूसी डालना है। इसमें आप पहले सेल करोगे और जैसे ही नीचे जाएगा आपका प्रॉफिट बुक होगा, ऊपर जाएगा मैं डिलीवरी देने को तैयार हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये अपना प्रोफाइल लिया तो ये भी आपको जो है दिन भर पैसे निकाल के देगा। तो जो आपका व्यू है मॉर्निंग में वो वैल्यू डाल दो और अपना ऑफिस चले जाओ, शाम को आके अपने नोट गिन लेना कितने नोट इसने निकाले आपके लिए, दैट्स ऑल। यस यस। एंड एक और चीज इसमें समझ में आई मुझे कि आप उसी स्टॉक में ट्रेड करो जो स्टॉक में आप कॉन्फिडेंट हो कि कल उठ के डिलीवरी लेना हो आपको, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। बराबर 100% यू आर राइट। अगर मैं रिलायंस में कंफर्टेबल हूँ मैं रिलायंस में करूंगा, एचडीएफसी में हूँ तो उसमें करूंगा, यूपीएल में तो यूपीएल में करूंगा। अभी जैसे मेरे को पता है कि यूपीएल का जो बाईबैक है वो 875 पे आ रहा है, ठीक है। यूपीएल का जो इन्होंने बाईबैक अनाउंस किया हुआ वो 875 का अनाउंस किया हुआ है। तो दैट मींस कि प्रमोटर जो है वो प्राइस को ज्यादा गिरने ही नहीं देंगे क्योंकि उनको तो बाईबैक करना ही करना है एज पर द बोर्ड अप्रूवल और एज पर द जो शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया है, राइट, ठीक है ना। तो वो प्राइस आपका इसके ऊपर मतलब पब्लिक बेचेगी नहीं ना, तो शेयर नीचे जाएगा ही नहीं। जैसे ही शेयर नीचे जाएगा वो लोग खरीदने को तैयार बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रमोटर को जो है 875 पे खरीदना ही खरीदना है। तो और अगर आप टीवी को भी देखो तो आप देखोगे कि यूपीएल का बहुत रिकमेंडेशन आ रहा है। सारे ब्रोकर हाउस बोल रहे हैं कि साहब यूपीएल 950 पे 1 या 1.5 महीने में जाने वाला है, ठीक है। दैट मींस कि दैट एवरीबॉडी इज बुलिश, तो अपन आराम से इस शेयर में काम कर सकते हैं। मैं यूपीएल में पूरा काम करता हूँ। यूपीएल में मतलब मेरे बार वही एग्जांपल देते हैं मोस्टली। हां, नहीं एग्जांपल देता हूँ, मेरी स्लाइड इसमें बनी हुई है, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल इन द यूपीएल राइट नाउ। पहले मैं बीपीसीएल का देता था, वो बीपीसीएल ने धोखा दे दिया। इधर the buy sell buy order will not be placed, that is only for the initial buy, isn't it? Right. For the chain reaction के लिए तो नहीं है। हाँ, चेन रिएक्शन में 2 ऑर्डर प्लेस होगा, लेकिन उसमें भी मैंने मैक्स बाय का कंट्रोल लगा रखा है ना, तो वो एक ऑर्डर से ज्यादा नहीं जाने देगा वो। ओके। जैसे ही आपका एक ऑर्डर सेल हो गया मान लो मॉर्निंग में, तो आपका 1300 का क्वांटिटी पूरा हो गया और मैंने मैक्स सेल क्वांटिटी का मैंने कंट्रोल लगा रखा है 1300 का। तो ये दूसरा मेरा जो है लॉट को सेल नहीं करेगा, एक ही लॉट सेल करेगा जब तक वो प्रॉफिट बुक ना हो जाए। जैसे ही प्रॉफिट बुक होगा तब वो दूसरा ऑर्डर सेल करेगा। देखो ये मैंने डाला ना, इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड में डाला है, इफ द 780 रेट इज ट्रिगर्ड इट विल बाय 1 लॉट फ्यूचर, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा तब वो सेल ऑर्डर डालेगा। तो इस तरह से ये कंट्रोल डाला। ये जो फार्मूले बनाए हैं ना उसी के लिए बनाए मैंने। ये +1 आपको जब बेरिश में डालना है और अगर आप बुलिश हो तो -1 करना है। So currently you are bullish on the UPL, sir? I am bullish. I am very bullish.
ये डेफिनेटली बता रहा हूँ 1 महीने के अंदर मतलब माय रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टेकन है बिकॉज दिस इज सेबी वायलेशन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 900 रुपीज बाय मई एंड। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन बिकॉज द सेबी का बहुत बड़ा रूल है कि अगर किसी ने ये बोला कि साहब आप रिकमेंडेशन दे रहे हो, देन आई विल बी बार्ड बाय सेबी फॉर एनी No, actually, your Google sheet में you have mentioned UPL equity only. Yeah. Not future. हाँ, वो मेनली बिकॉज कि यूपीएल का बाईबैक अनाउंस हुआ है ना। अब जैसे टीसीएस का बाईबैक अनाउंस हुआ था, और टीसीएस का बाईबैक अनाउंस होने के बाद में वो 3600-3700 चल रहा है अभी, और 2-3 महीने के अंदर वो 4000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये नहीं कि वो आपका टीसीएस 3200 पे आ जाएगा। तो मतलब दीज आर क्लियर इंडिकेशन कि अभी जो गेल का अनाउंस हुआ है तो गेल में भी 10 रुपए नीचे जाएगा, बट अल्टीमेटली गेल वापस ऊपर आना ही आना है। Buyback now gives the indication of the promoter confidence in the stock. Okay. Sir, I have a question. Yeah. When we have put maximum buy quantity and maximum sale quantity is 13,000. 1300. Right. So how it will take another action? So it will not take na. That is what I'm trying to say. Ki it will. You are starting with the bullish or bearish. Then I'll explain. Bearish. Bearish. Okay. ठीक है. आपका bearish वो है कि I will sell first and I will not buy first. Correct? Because you are bearish. Correct? Okay. But you have put a condition ki that I don't want to sell 2 lot at a time. Okay. But any time my position should not go more than 1 lot. Okay. Correct? ठीक है. अभी क्या किया आपने LC जो डाला है वो डाला buy price minus offset plus 1. That means 780 minus 5 plus 1 is 776 मैंने डाल दिया इसका लोअर सर्किट. Right. लोअर सर्किट. और अपर सर्किट डाल दिया मैंने 786 का. Okay. करेक्ट है. ठीक है. नाउ जब आपका एल्गो स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये 2 ऑर्डर डालने की कोशिश करता है, लेकिन आपने यहाँ सेल डाला हुआ है तो ये सेल का ऑर्डर नहीं डालेगा. वो क्लियर है आपको? ओके. ये सिर्फ सेल का ऑर्डर डालेगा, बाय का. हाँ, सेल का ऑर्डर डालेगा, बाय का ऑर्डर नहीं डालेगा. क्योंकि तो पहला सेल ऑर्डर कितने पे गया बताइए? 775. 785 पहला जो सेल ऑर्डर गया आपका, जो 780 प्लस 5 जो सेल ऑर्डर है वो 785 का पहला ऑर्डर प्लेस हो गया. राइट. बराबर. अच्छा, बाय ऑर्डर प्लेस नहीं होगा. क्लियर है? ओके. मैंने नेक्स्ट लिखा ना कि बाय ऑर्डर विल नॉट बी प्लेस्ड ड्यू टू सेल साइड. क्योंकि सेल साइड डाला हो तो बाय ऑर्डर नहीं जाएगा. ओके, बराबर है यहाँ तक ना. जब तक सेल नहीं होगा बाय नहीं करेगा. बराबर. अभी 785 का रेट ट्रिगर हो गया आपका. आपने ऑर्डर डाला हुआ था 785 का और 785 का रेट आ गया. तो 785 का रेट आ गया तो क्या होगा कि इट विल सेल 1 lot फ्यूचर एट 785. करेक्ट? राइट. 785 का आपका रेट पड़ा हुआ है ना, आपने सेल ऑर्डर डाला, 785 का रेट आ गया तो एक आपका ऑर्डर आपका चला गया. अब जब आपका ये ऑर्डर 785 का हो गया तो क्या करेगा ये, इट विल प्लेस 2 ऑर्डर. एक बाय ऑर्डर है, सेल ऑर्डर डालेगा. बराबर है. तो बाय ऑर्डर कितने पे डालेगा ये? 785 माइनस 5 780 पे डाल देगा ये. 780 पे डाल. क्योंकि बाय ऑर्डर अभी पड़ा हुआ नहीं है सिस्टम के अंदर. तो 780 ऑर्डर, लेकिन ये सेल ऑर्डर नहीं डालेगा. क्यों? Why it will not sell order 790? Tell me. There is a condition maximum quantity. क्योंकि मैंने एक लॉट मैंने ऑलरेडी सेल किया हुआ है जिसमें मेरा 1300 है, तो अभी इट विल नॉट प्लेस अनदर 7 ऑर्डर ऑफ 790. दैट इज द नंबर 1 कंडीशन. नंबर 2, मेरा अपर सर्किट मैंने 786 में डाला हुआ है. ओके. तो 790 का ऑर्डर जाएगा ही नहीं. ओके. 790 का नहीं जाएगा. राइट. 790 ऑर्डर जाएगा ही नहीं क्योंकि मुझे ऑर्डर डालना ही नहीं जब तक मेरा खरीद ना चले, क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ 785 पे. तो जब तक वो रेट वापस 780 पे आके मेरा प्रॉफिट बुक ना हो जाए, ये आगे जाएगा ही नहीं. ये अपना एल्गो वहां पे रुक जाएगा. बराबर है? क्लियर है? अभी आपका जो है क्या हुआ कि 780 का रेट ट्रिगर हो गया आपका. 780 का हो गया तो ये क्या आपका प्रॉफिट बुक कर लेगा जो 785 में शॉर्ट किया हुआ था आपने. आपने 785 शॉर्ट किया था ना पहला ऑर्डर. राइट. ये देखो आपने यहाँ पे 785 पे देखो 785 का. राइट. आपने सेल किया हुआ है तो 785 पे सेल करने के बाद में 780 का रेट आ गया तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया. 6,500 का प्रॉफिट आपका आ गया. राइट. जैसे ही इसका प्रॉफिट आ गया, अभी ये जो है एक बाई ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकता क्योंकि एक बाई ऑर्डर ऑलरेडी आपका 770 वाला पड़ा हुआ है लोअर सर्किट की वजह से. नहीं, लोअर सर्किट की वजह से आपका 7 ऑर्डर नहीं जाएगा. ओके. क्यों कि 780 माइनस 5 775 होता है. राइट. और 776 का मैंने लगा रखा है लोअर सर्किट. तो 770 का ऑर्डर प्लेस नहीं होगा. राइट. और सेल ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा 785 का. राइट. होगा 780 क्योंकि 780 प्लस है 785 का. तो जो मेरा स्टार्टिंग जो मेरा था 785 का, मैं उसी कंडीशन पे आ गया. देखो
मैंने स्टार्ट कैसे किया था? 785 पे स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे. When I started the algo, my first sale order was 785, correct? Right. Now I have again come back to the same position of 785. Right. So this cycle will repeat. That No. means कि for every 5 rupees I will go on booking the profit. Otherwise it will be just standing. That's all. That is the logic of this whole concept. नहीं नॉर्मली मेरा लॉजिक मेरा थिंकिंग ये था कि मैक्सिमम बाय क्वांटिटी फुल डे में वंस इट इज रिच इट विल नॉट रिपीट. नहीं फुल डे नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये 1300 से ज्यादा सेल नहीं करेगा. ओके. और सेल करने के बाद ही बाई करेगा. ये पहले बाई नहीं करेगा क्योंकि आप बेरिश हैं. राइट. आपने बेरिश व्यू लिया हुआ है ना, तो इट विल फर्स्ट सेल एनी टाइम. इट विल फर्स्ट सेल 1300 शेयर दैट एक लॉट सेल करेगा. So as and when it will complete its first transaction, it will repeat second transaction. हाँ, वो कंप्लीट प्रॉफिट बुक होने के बाद ही वो सेकंड को करेगा. वही तो बता रहा हूँ मैं आपको. यानी कि हर साइकिल में आपको 6,500 रुपए आते रहेंगे. ओके. इसमें एक सजेशन था मेरा. No, this is applicable for only future. नहीं, किसी में भी कर सकते हो आप ये. You can use the strategy for मतलब anything you can use. Equity also. Currency. हाँ, equity में भी कर सकते हो same setup. ये setup you can use anywhere. ओके, I got it. हाँ, कहीं भी यूज करो ना सेटअप. बट ये फ्यूचर में ज्यादा काम करेगा क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है ना आपको. राइट. इक्विटी में तो क्या अपन डिलीवरी ले लेंगे या डिलीवरी दे देंगे तो मुझे उसमें टेंशन नहीं है इतना. मैं 100 शेयर से मान लो यूपीएल का कर रहा हूँ मैं इक्विटी में, तो आई विल टेक द डिलीवरी और आई विल गिव द डिलीवरी, तो उसमें मुझे ज्यादा पैसा आएगा. यहाँ पे क्या रिस्क, मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है कि अगर मान लो मैं 4 लॉट शॉर्ट कर दूं और वो शेयर जो है एकदम भाग जाए ऊपर, तो मेरे को ह्यूज लॉस हो जाएगा. इसलिए सारे कंट्रोल डाले हमने. और ये सारे आपको एल्गो ट्रेडर प्राइम में मिल रहे हैं. नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें ये कंट्रोल अवेलेबल नहीं है. नहीं है. दैट इज ट्रू. हाँ, ये जो नया वाला जो वर्जन निकाला ना उसके अंदर ये सारे कंट्रोल्स हैं इसके अंदर. ओके. What is PKG? What is your experience on Nifty Bs actually? अरे निफ्टी 20 में क्या है कि वो मतलब वो हो गया कि जैसे आप चना खा रहे हो एवरी डे. वो वाला प्रॉफिट है. 400 500 1000 रुपए आता है. Sir, it is same. Sir, it is same as like in this or any other stock. Only the thing is that the ticket size is very less. So I mean, Pradeep ji gets frustrated with that because it is generating. I mean, the ticket size is very less for him. So that's why he looks like not interested in that. Otherwise, if you look at in terms of the percentage return, it is same as you would do in any other thing or for sake of this future as well. Yeah. अगर निफ्टी 20 में हायर क्वांटिटी सब करो 250 शेयर से या 300 से, तो आराम से दिन में 3-4 हजार रुपए आराम से निकल के आ जाएगा. बट अगर 50 शेयर से कर रहे हो, 100 से कर रहे हो, तो वो क्या 1000-1500 आएगा. तो आदमी को लगता है यार कि your number is 200 if I am right. Now I increase to 200. Earlier I was 200. I remember your quantity. Because you would have done a lot of research, so I don't know. अभी मैंने क्वांटिटी बढ़ा दिया है. See, now I have a full confidence in this algo. I am working 100% through this algo only. I don't put any manual trader. मैं manual trade, ठीक है ना? So I have done hundreds of experiment किया. Then I realized कि increase the quantity and slightly reduce your set off. तो ज्यादा ट्रेड होंगे, ज्यादा पैसा आएगा. That is what I'm using it now. Sir, and maximum quantity you have put 1,000, 200 and 1,000, and set up you have kept to 1 rupee. वो सब चलता रहता है मेरा. I keep on doing various experiment. तो मेरे को मतलब वो डिलीवरी लेने या देने में प्रॉब्लम नहीं है. I never put MIS order. I never put MIS order. Sir, how can we take and give delivery? क्या मतलब? How can we take and give delivery? Delivery, that means if you are short by evening, then you have to do the delivery, na? Then you should have a share in your account. That's a delivery that you are giving the delivery. No, but how? As a layman, carry forwarding. That means carry forwarding. नहीं. आपके डीमेट अकाउंट में अगर शेयर है, then only you can sell, na? Otherwise, it will not allow you to sell. But your broker will not allow you to sell. No, but I will have to give it by this thing manually or? नहीं, ऑटोमेटिकली आप अगर आपने पावर ऑटो ने दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट कर देगा वो. और अदरवाइज यू टू फिल EDIS एवरी डे इन द मॉर्निंग. ओके, दैट आई ऑलरेडी डन. हाँ, या तो EDIS करो या फिर आप पावर ऑटो दे दो वंस फॉर ऑल,
तो एवरी डे वो अपने आप आपके अकाउंट से डेबिट कर देगा वो जितना आपने बेचा। मैंने लहरी पावर जी, में दिया हुआ। हाँ कुठारी जी, भाटिया बोल रहा हूँ सर। हाँ, ये भाटिया जी, थोड़ा बताइए। मेरा ना ये एल्को प्राइम को भी मैंने डाउनलोड नहीं किया है, थोड़ा उसका लिंक भेज के या तो विजय जी करा देंगे तो मैं अभी पुराना वाला यूज कर रहा हूँ, पुराना नहीं, यूज कभी भी मेरे को जो वो आपका एनी डेस्क में आ जाना, या आइदर विद हिम और विद मी, आई विल डू, डोंट वरी। आई एम स्टिल यूजिंग ओल्ड वन, आपका पुराने वाला यूज कर रहा Your हूँ। latest jobbing sheet, sir. Latest jobbing sheet, you have kept you have kept mostly equities, and in the future you have kept only USD INR. Hello. You not kept other equities like UPL, sorry, futures. मीटिंग होती है like UPL. You can do it. एक्चुअली मुझे क्या लग रहा था फ्यूचर में जो है ना, मतलब फ्यूचर में मेरे को क्या करते हैं ना, कैसे मीटिंग होती है। एक मिनट, फ्यूचर में क्या है ना कि वो थोड़ा पोजीशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है कभी। सर प्लीज म्यूट अनिल गुप्ता। I am talking, sir. I am talking. Oh sorry sir, mute Shekhar, sorry. ओके, हाँ, इट्स ओके। हाँ, तो मैंने जो फ्यूचर में मैंने एक्सपेरिमेंट सारे किए हैं, फ्यूचर में मतलब कभी कभी क्या हो जा रहा है ना कि वो आपने जैसे डिलीवरी ले लिया, ओके, और डिलीवरी लेने के बाद में वो यूपीएल 20 रुपए और नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा आदमी को लगता है यार अगर मैंने नहीं किया होता तो अच्छा रहता ये, ठीक है ना। और जबकि इक्विटी में मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी में मैंने क्या किया, अभी एक लॉट को मैंने पांच में हिस्से में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1300 का अगर मेरा लॉट है तो मैं 260 या 200 में मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब इक्विटी में मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो उससे क्या है कि चीज मेरे कंट्रोल में चल रही है। अब फ्यूचर में क्या है कि आप अगर एंड ऑफ द डे में एक लॉट लॉन्ग हो गए या शॉर्ट हो गए और पोजीशन आपके अगेंस्ट में चला गया तो थोड़ा आदमी को फील होता है, वो इशू था, इसलिए मैंने जो है अभी फ्यूचर में मैंने थोड़ा कम किया। फ्यूचर में खाली USD INR में भी पहले you having 6 side setups. Now you have अरे only one. वो तो मैंने बताया ना, वो तो मैंने आज मॉर्निंग में बताया ना कि वो मतलब दैट इज क्रिएटेड अ हैवॉक इन माय अकाउंट। अच्छा। हाँ, वो उसकी चक्कर में मेरे 1000 मतलब फ्यूचर मेरे लॉन्ग हो गए। आई बिकेम द बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ मुंबई ऑन फ्राइडे। 1000 लॉट लॉन्ग बिकॉज ऑफ द स्टॉप लॉस इशू ट्रिगर हो गया मल्टीपल रोज के अंदर, तो वो हमने वो सेटअप निकाल दिया। दैट वाज अ रॉन्ग सेटअप यूज्ड बाय अस। So no, PKG, that you mentioned, suppose even with single row, suppose I end up with slight loss with 10 lots short USD INR. So that you suggested, no, that PE I can short PE 77. P76, 76. P76, same 10 lots. हाँ, 10 लॉट शॉर्ट कर दो तो वो थोड़ा एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है। यू विल गेट एडिशनल 20-25 पैसा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो वो अगर और ऊपर जाता है तो पी में फायदा होगा और नीचे आता है तो फ्यूचर में फायदा होगा आपको, ऐसा करके। ओके। एक्चुअली कोई भी स्ट्रेटेजी आप लो उसमें पूरा काम करोगे ना तब ज्यादा मजा आएगा। मेरा क्या हो रहा है कि मतलब मेरा क्या इशू हो रहा है कि आई एम ट्रेडिंग इन वेरियस स्टॉक्स एंड आई एम डूइंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, तो मेरा जो है ना मतलब पूरा मतलब खिचड़ी बन जाता है कभी कभी। तो अभी मैं जो है इसको थोड़ा मेरा वो पोर्टफोलियो को मैं छोटा करूंगा, मैं वो 10 स्क्रिप्ट से आई विल रिड्यूस टू 4 और 5 स्क्रिप्ट, देन आई विल एंटर इन द दिस फ्यूचर इन अ बिग वे। दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग नाउ। मैंने अभी करेंसी में भी यही डिसाइड कर लिया, करेंसी आई विल बी ट्रेडिंग विद 5 लॉट एट अ टाइम नाउ। ओके, मतलब 5 लॉट मेरे बाई सेल में चलेंगे और 5 पैसा का सेट ऑफ रहेगा और मैक्स क्वांटिटी इज 50। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई ऑन द मंडे का मेरा वो सेटअप है। तो उसमें मुझे देखना है कि क्या मेरे को उस दिन में एक दिन में मेरे को 5000 का प्रॉफिट आता है क्या। अगर 5000 का प्रॉफिट मेरे को इससे आ गया तो देन आई विल कंटिन्यू विद दिस सेटअप, मतलब 5 लॉट एट अ टाइम, 5 लॉट बाय, 5 लॉट सेल, सेट ऑफ 5 पैसा ऊपर नीचे एंड मैक्सिमम क्वांटिटी 50। माय टारगेट इज 5000 रुपीज। तो 5000 रुपए आ गया मंडे में तो देन आई विल शेयर दैट ट्रेड विद एवरीबॉडी। 2-3 दिन ट्रेड करके देखता हूं मैं, देन आई विल शेयर विद एवरीबॉडी। बट अभी मुझे प्रॉब्लम क्या पता है क्या, मेरे को क्या एक अप्रीहेंशन आ रहा है कि अपने ये ग्रुप के अंदर करेंसी में इतना लोग ट्रेड करने लग गए हैं कि फिनवेशिया से एटलीस्ट 1000 लॉट हमारे लोग एवरीडे कर रहे हैं। तो मेरे को ये डर लगने लग गया कि कहीं ये मतलब एनएससी के या सेबी के निगाह में ना आ जाए कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या है, अगर आप जीरोधा में करो ना तो जीरोधा में कम से कम 50 रुपए का मेरे को प्रॉफिट आएगा तभी मुझे काम करना है, क्योंकि वहां 50 रुपए का मेरा खर्चा है पर लॉट में, और यहाँ मेरा खर्चा है 1 रुपया 90 पैसा, एग्जैक्टली 90 पैसा का खर्चा है। मतलब अगर मैं फिनमेशिया में अगर मैं 1 लॉट खरीदता या बेचता हूँ तो मेरे को 90 पैसा का खर्चा आता है, और मेरे को जीरोधा में आ रहा है 50 रुपए का खर्चा, 50 रुपए का खर्चा आता है, ठीक है ना। तो दिस एल्गो इज एक्सट्रीमली सुटेबल फॉर फिनमेशिया ओनली। जीरोधा में ये इतना मजा नहीं आएगा, जीरोधा में 50 रुपए के ज्यादा करना पड़ेगा। सर ये जैसे
like say in your case, your capital base is quite high. So the people who have say medium capital base is 20-30 lakh rupees, and in their experience of the month of April, and as to what they have done will be very, very relevant for most of us. I mean, your setup for large capital may not be suitable for everybody. So if I would request my friends here to share that kind of experience, which is say where the base is about 10-20 lakh capital, and what kind of selection they do, and what profits they have made, and how they have done. I think that will be more relevant, sir. Okay, boliye. I will welcome such feedback. Ramakrishna ji, you can share your experience now. Ram? Yeah, I'm just 2 days old in Algo. Mr. Ramakrishna capital is also very high, sir, very large. I'm only 2 days old. No, Ramakrishna ji has used a very simple setup of 3 paisa in currency, 3 paisa in currency, and lot size was 1 and max quantity is 50, and he generated 2,500 both the days. Yeah. Now just imagine ki if instead of 1, if you would have kept 5 as a lot or 2 as a lot, each profit would have been double. Yeah, that's correct. तो 2 दिन में उन्होंने ये किया, तो इसके लिए तो लार्ज कैपिटल नहीं चाहिए ना. No, not double with 2 lots. It will grow. It will go exponentially high. अच्छा, आप ज़्यादा expert है, Algo क्या पता? No, I'll tell you, Vijay, with 1 lot, the maximum, chain reaction may it went up to 30 lots, 30 to 32 lots. So you can imagine 2 lots means it would be 64 into 2000. Okay. It depends like how many trades got, buy and sell has happened and got offset. Yeah, that's correct. अभी राम में मंडे का मेरे को बताऊं, मंडे का मेरा सेटअप क्या है? For my another account, I had opened one more account for testing purpose. उसमें what we are going to do it, ये राकेश जी ने मेरे को बताया है कि I am going to take the 5 rows, but 5 rows जो होंगे वो different week के रहेंगे. वीक का, ओके. यानी कि पहला यूएसडी का रहेगा, वो रहेगा आपका इमीडिएट 1 वीक, उसके बाद में उसके अगले वाला वीक. तो आई विल टेक द 5 डिफरेंट वीकली ट्रेड एंड आई विल टेक द सेटअप ऑफ एक में 2 पैसा, एक में 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा. ये करके मैं ट्रेड करूंगा मंडे को, एंड देन आई विल गिव यू द फीडबैक कि कौन सा वाला सेटअप ने सबसे ज्यादा पैसा निकाल के दिया है. ओके. कि 3 पैसा वाले ने ज्यादा दिया है या 5 पैसा ने ज्यादा दिया, और ये मैं ट्राई करने वाला हूँ 1 वीक तक. तो 1 वीक विल बी द फेयरली लॉन्ग पीरियड विच विल एस्टैब्लिश कि किसमें ज्यादा पैसा आता है. ठीक है ना? तो ये मैं मंडे से जो है मैं एक सेपरेट अकाउंट में ये वाला जो है मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ. ठीक है. मेरा जो अपना अकाउंट है उसमें 5 से करूंगा मैं, और ये जो टेस्टिंग वाला जो है उसमें मैं एक लॉट पे करने वाला हूँ मैं, फिर 2, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा, बट ऑल विल बी द डिफरेंट एक्सपायरी पीरियड, सो दैट वो मेरा स्टॉप लॉस वाला इशू ना आ जाए. ठीक है ना? तो ओपन करेंगे इसको. तो आई एम डूइंग ऑल दिस नाउ बेसिकली टू कम टू अ ऑप्टिमम सॉल्यूशन व्हिच विल बी सूटेबल फॉर एवरीबॉडी. मैं वही कोशिश कर रहा हूं करने का. एग्जैक्टली. ठीक है ना? या और कोई फीडबैक देना चाहता है? जैसे गुप्ता जी बोल रहे थे कि कैसा चल रहा है ये. एक्चुअली मतलब गुप्ता जी मेरा क्या है कि मतलब पब्लिक इज शाय ऑफ शेयरिंग देयर प्रॉफिट फिगर. पैसा सब बना रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको मैं, लेकिन क्या है कि काफी लोग जो ना वर्किंग वाले हैं इसके अंदर, तो वो लोग ना ये थोड़ा हेजिटेट है पब्लिक फोरम में बताने के लिए. Am I correct? Yes. Yes, sir. Could be. Yeah. That I agree. It is not fair also to ask somebody to share the profit because it is. No, I think, sir. As long as they truly mention. It's a sharing platform. After all, a working employee who is making profits here will have to undergo our taxation purpose also. He will also have to file tax including this profit. So that there should not be any harm here. It's just नहीं गुप्ता जी, प्रॉब्लम क्या है कि as per the CDA rules, any working officer is not allowed to trade in the F&O or in equity. You can do only long term investment. अगर जैसे आपको यूपीएल का शेयर खरीदना है, if you are a working employee, you can go for a long term investment कि आपने 2 महीने के लिए खरीदा, 6 महीने खरीदा, no problem. But if you are doing every day buying selling, then it is a violation of CDA rules.
So that could be one of the reason ki why the working officers, they are not sharing their trade, and which is fair enough, which is exactly fair, because they may be trading in their wife name or maybe in the children name, so it's okay. It's okay. I take it absolutely nothing wrong in it. I am a retired person, I can share anything. You are a retired person, you can share anything, but not everybody. That is, but एक चीज है कि अगर मान लो 100 लोगों ने अपना एल्गो को अगर रिन्यू किया है मई महीने के लिए, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि द पब्लिक इज मेकिंग मनी. अदरवाइज लोग इसको रिन्यू नहीं करते ना भाई. आपने टेस्टिंग के लिए 1 महीना यूज कर लिया, मार्च में यूज कर लिया, अप्रैल में यूज कर लिया, अब मई में आपने रिन्यू किया है, इसका मतलब पोटेंशियल नजर आ रहा है लोगों को. दे आर एबल टू मेक द मनी, दैट इज द रीजन दे हैव रिन्यूड इट. अदरवाइज हु विल पे द मनी? तो पैसा लोग बना रहे हैं. और जो मेरे को डायरेक्ट फीडबैक आता है ना, अभी तक मुझे किसी ने एक ने ये नहीं बोला कि उसको लॉस हुआ है. एवरीबडी इज कंफर्मिंग दैट दे आर मेकिंग द मनी, बट आई कैन नॉट शेयर दैट फीडबैक. And making every day, making, I mean, an ample amount of money. Ample amount of money every day. So which is a clear indication. And then बात सही भी है कि भाई आपने बोला कोई रिकॉर्ड कर ले या कहीं जाके वो आपके वो सीवीसी को भेज दे या आपके कंपनी के बॉसेस को अगर वो चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इट्स ओके, ठीक है. नहीं तो लोग रिन्यू नहीं करते ना. But there will be many retired people also making decent money. I mean, of that capital range, I think from in our forum, there will be 40-50% retired employees also. Retired more than 50%. More than 50%. So they will, many of them will be having medium capital. Yeah. And would have learned the ropes. उनको एक दूसरा प्रॉब्लम गुप्ता जी क्या आ रहा है कि वो थोड़े से जो आपके रिटायर्ड वाले लोग हैं ना, उनको एल्गो में थोड़ा सा इशू आ रहे हैं. उनका जो माइंडसेट है ना एक्सेल वाला, वो नहीं आ पा रहा है. एक्सेल जो है ना, अपने यंगस्टर्स को तो बहुत आराम से समझ में आ जाता है. वो आधा घंटे में 1 घंटे में दे कैन रन एनी प्रोग्राम. नहीं सर, मैं शेयर करता हूँ आपको. मैंने अपने इस पुराने वाले एल्गो से आई थिंक मोर देन 15-20% प्रॉफिट लिया है. ओनली थिंग इज कि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना, वो लॉस में कन्वर्ट हुआ है. सी अनरियलाइज्ड वी कैन नॉट से इट इज फुली प्रॉफिट एंड लॉस टिल द टाइम वी अर्न इट. तो जो हमारी ऑलरेडी होल्डिंग्स थी उसको, क्योंकि बीच में मार्केट बहुत डाउन हो गया, तो उसका अनरियलाइज लॉस हो गया. यानी ऑल एवरी शेयर इज इन रेड नाउ. बट जो एक्चुअली मैंने रियलाइज कर दिया प्रॉफिट, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 15 to 20% ऑन द सिंपल कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज ओनली. फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक. लेकिन भाटिया जी, मैं आपको पर्सपेक्टिव बोलता हूँ. अगर आपने ये एल्गो के नहीं बजाय अगर आपने डायरेक्ट शेयर लिया होता, उसमें तो लॉस आपको बहुत ज्यादा हो गया होता ना. नेचुरली हाँ, वो उसमें मेरे को प्रॉब्लम होती बहुत ज्यादा. सर भाटिया जी, you have beaten the mutual fund managers by 10 months. In 2 months, if you had taken 20% return on your capital, mutual fund managers struggle to give 20% return in a year. That's correct. You have beaten them by 10 overs, you know, in 2020 लेकिन अगर हम एज ए सीए अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकालें, अगर मैं उसको अनरियलाइज का इम्पैक्ट ले लेता हूँ तो वो कम है. लेकिन अनरियलाइज को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले रहा, बिकॉज वो तो मेरी होल्डिंग ही कम है ना सर. होल्डिंग कम है. होल्डिंग ही कम हो गई है. मतलब जो शेयर बैलेंस में वो होल्डिंग कम हो गई है. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब भाटिया जी, अभी आप शायद इससे रिटायर हो ना, आरईसी से? हाँ, आरईसी से सर. हाँ, आरईसी से. ही वाज डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस देयर. और वो होने के बाद में उन्होंने ये एल्गो किया कि मतलब ही हैड अ रियल माइंडसेट टू यूज द एल्गो, यू यूज द एक्सेल, एंड देन ही इज एबल टू जनरेट द मनी. तो इवन रिटायर्ड लोग भी आराम से कर सकते हैं. थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, बट इफ यू कैन यूज एक्सेल देन देयर इज एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम. एक्सेल का थोड़ा सा वर्किंग नॉलेज आपको आना चाहिए. जी हाँ, जी नहीं, हम सर हमने तो सर ये मैंने अपनी कंपनी का जो इससे पुरानी कंपनी में इवन ईआरपी मैनेजमेंट भी दिया है, तो मुझे वो लॉजिक ये सब जो विजय जी बताते हैं थोड़े बहुत समझ में आते हैं. बिकॉज एनी सॉफ्टवेयर विल वर्क ऑन द लॉजिक ओनली. लॉजिक मीन्स आपको वो देना ही पड़ेगा और वो उसी पर ही रन करेगा. सो उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं. तो अगर वो एक आदमी के लिए लॉजिक काम कर रहा है तो सबके लिए काम करेगा. दैट इज द मेन थिंग. Sorry, exactly. That is an ERP program only, na. It's nothing but a smaller ERP program. ERP में अपन पूरा लॉजिक डाल देते हैं, उस हिसाब से काम करता है ERP. बट ERP जो आता है वो 10 करोड़ का आता है और अपना ERP आ रहा है 1000 रुपए. वो तो पूरी कंपनी का एज ए होल होता है सर. हाँ, ये है कि ये वाला सॉफ्टवेयर चाहे विजय जी ने अच्छे से बनाया है,
जो भी लिमिटेड पर्पस का वो फंक्शनिंग सही कर रहा है सर, वो तो है। बस थोड़ा सा जो अभी स्टॉप लॉस वाला इशू को मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा 4-5 दिन में, बाकी इसमें अभी तो और कोई इशू नहीं आया है। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा इशू आया है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, तो R&D चल रहा है मेरा, हो जाएगा वो मेरे ख्याल से। जी जी Kothari sir, this is Anand here. क्या बोलिए आनंद साहब? See, I have tried with this USD INR with a one paisa offset. 1 paisa is too small, 1 paisa is. But क्या आपका रिजल्ट है? About 4,000-5,000 rupees I got, but unfortunately what I did was I put stop loss. It squared off my profit, but I think stop loss I should put it higher. So नहीं, स्टॉप लॉस का थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा और इसको स्ट्रेंथन करने तो मैं बताता हूँ। आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। तो आप मतलब विद 1 पैसा यू आर एबल टू मेक 4,000 rupees. Yeah, I did that, and I had put 40 lots. As I told you, I had some export payment to be made. So I did that. The reason being that 1 paisa is like too many trades happens, and it is not just one-sided trades, it is trades happening on both the sides. So every trade is generating 20 rupees. So I mean, continuously happening throughout the day generates a huge profit. The only thing is that you have to look at what is the max quantity you are able to take. So as he has money coming in from his business and he has to hedge it. Remember the other day we were talking about this. So I mean, for him this 2 paisa setup is excellent actually. No, but are you able to make every day this money? No, because it has gone a little higher. And also, I know I have my portfolio in Zerodha, which I have to shift. So once I do that, then I will have more capital. Then I can go for a little larger quantity. And another thing I did was I tried inverted strangle. It is giving good result. Inverted strangle in ITC. That of course I did manually. If you can do something on in this algo, probably it will give you a better result. So what strikes you took for inverted strangle? 5 rupees below and 5 rupees above the ATM. See, for example, if ITC is 260, I'll take a 255 call and a 265 put. You'll short, na? You'll short or long? Only short. Okay. And of course, when I get about 6,000-7,000 rupees, I square off. No, but you can do this in algo also. I have not tried because I'm scared. Yeah, you can do in algo very easily. Also, you can do in the algo also. You have to just put the strike price of both the thing, and then you can put your set off as 2 rupees or 3 rupees. It will work even there also. No problem. But it will work as an individual row. It will not work as a combined row. I know. I got it. Because you are taking one trade of call short and one trade of put short. So both the thing you can take in the algo. There is no problem. You can take in the algo trader. I will try that. And I will also try to combine. If it's a portion is remaining, I will, for example, if I am put it short, I will sell a put. I'll take the next one. I'll take a hedge for that. So Anandji, your recommendation is to use the lower set off in case of currency, then higher set off. Higher set. And also, you see, 40 lots I had put. 40 lots is about 80,000 rupees. That is nothing, na? That is absolutely okay. There's nothing. No, sir. UPL, sir, I beg to differ here because he has got a obligation to trade or to hedge his income which is coming in USD or going out in USD. For him, that small offset is okay. But if we people who do not have any such holding or other source from where we have to compulsorily hedge our position, this point 1 paisa would, if there is sudden spike on upside or downside, then we might get stuck there. For him, it is okay. For him, actually, it is a best setup and excellent setup for him. Yeah, true. Of course, that is for a short period. On a long run, what you are telling is okay, because this is once the commitment is over, then I will not have the hedge. Absolutely, yeah. So I just experimented, and it looks all right.
Yeah, I think, but And yeah. I mean, thanks for sharing that setup and this feedback. It actually helps us to think about, now we have got a different perspective. We were thinking so many, I mean, threads were going on this, and I mean, we have got another perspective on this. Yeah. Okay, we'll share more of it once. See, I know it shifted from zerodha, which I will do. Then probably my margins will be better, so that I can trade a little more aggressively. Okay. One of our participant, he just shared, he has 1 lakh share of UPL bought at 1 rupee. Oh. His grandfather has bought UPL share in 1 rupee, 1 lakh share. मैंने कहा यार, then you don't need this webinar, everything. You just go and go to a hill station and enjoy your life. 1 lakh share. He must be sending that message from Cane Island. He must be owning an island at this point in time. 1 lakh share of UPL bought at 1 rupee. My God, this is 1,000 times already. But there are actually such many such stories around. Yeah. So what I suggested him, he's asking me at what price I should exit. मैंने कहा either you don't exit at all, or you start shorting the future, because you can always give the deliverer and you can make easily 2-3 lakhs every month. Go on shorting the future. If it goes below, take the delivery. If it goes up, you have the stock to give the delivery. Like that, you can make easily very good money. Yeah, good, fantastic. So, Colin, any comment? Colin, you are there? I'm here. I am only hearing. I am also waiting for some margin to clear into my account. So I am only seeing all the strategies, and I did some trading, but not so extensively. So, but this is the plan. I understood all the strategies. I'll be traveling soon, so that is why I'm not doing so much. Okay. But still, I understood what is happening. So it is very, very impressive. I'm just trying to see if as it progresses, then I will take it. Thank you, sir. Very good. Fantastic. शुभम गर्ग जी, आपका कुछ फीडबैक है? शुभम, no sir. Okay. Niranjan ji, you are also doing the big trading, na? Niranjan ji. Niranjan, any feedback? No, he does not say anything. Okay. और किसी का कोई feedback है? Anything you want to discuss? Anything? No problem. On the algo or any other strategy or any issue you are facing, I can reply. सर, ये फिनविशिया का जो अकाउंट्स का डिटेल्स है, ट्रायल का ये डिटेल्स है, ये सारा आप जैसे प्रीवियस वेबिनार्स के रिकॉर्डिंग्स में मैं अगर दूंगा तो उसमें ही सारा डिटेल मिल जाएगा या? हाँ, सारा का सारा जो मेरा वो पीके कोठारी वाला जो चैनल है ना, आई एम अपलोडिंग ऑल दिस वीडियोस देयर, so you can go and watch there. There's no problem. And all are without advertisement. मतलब मैंने जो अपना YouTube चैनल रखा है उसके अंदर आई इंश्योर की दैट एक पैसा जो है मोनेटाइजेशन का नहीं होने दिया इसको. So without any advertisement, you can see all these videos there. Great. Yeah, you can watch there. Thank you. Yeah. So कोठारी सर, एक क्वेश्चन है. हाँ, बोलिए. ये क्लाउड बेस जो प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली प्रॉब्लम वही होता है कि पावर शॉर्टेज और इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है कभी कभी. तो अगर क्लाउड बेस होता है तो वी नीड नॉट हैव टू सी द थिंग्स दैट our power connection is on or the net is on. तो ये कब Rakesh ji is working on this, and I will request Rakesh ji to respond this query. Rakesh ji, yeah. Hemant and everyone, we will be coming up pretty soon with the cloud solution, and just wait for 2 more weeks, and we'll put everyone on the cloud. And I mean, when I say everyone, that means not literally everyone. There will be certain criteria for the people to go on cloud. So we'll come out with something in 2 weeks. That is already there. I mean, it is almost ready. We have to finalize certain things. That's it. So don't be assured that a solution for this algo will be there. It is already there with us. We are just finalizing few final
things. The film is already has been shot. The editing is almost done, and we are about to working on the release date. That's it. Yeah. So the reason is that, so I'm a doctor. I'm actually leave of my hospital at morning 8 o'clock. And if I do the things and if in between something happen because no one look after, means I'm gone to hospital, if I'm working busy with my work, so I could not actually look after the whether the power is on, my laptop is not sleeping more. Right, So right, right, right. that's the reason I'm not started yet. So Hemanji, for you and for everyone, I'll tell you how it is gonna work. Okay. You once it is on cloud, then you do not have to start the algo anywhere, either on cloud or on your own PC. It will automatically work. It will automatically start on time. The only thing you will be required to do is that before market open, just update your Google sheet in which you put the stock and offset and whatnot. That is the only thing you would have to do. And that too, if you're not in front of a computer, that Google sheet can be updated from your mobile as well. So literally, once you're on cloud, you do not need a computer, and there will be no issues of power outage or anything else. So Vijay, how the Google sheet we can edit through mobile? It will be very difficult, no? Sir, then you can use computer. If you find it difficult, then you can use computer for that. No, Ramakrishna, very easy, very easy. What you should do is you first install the Google Sheet in your mobile. Okay. Don't open the link in the browser. You first install the Google Sheet in your mobile. Okay. Okay. Once your Google Sheet is installed in your mobile, then you will log in through your Gmail account. Yeah. Okay. Once you are logging through Gmail account in your Google Sheet, then that particular sheet will be very easy to edit. The problem is that we try to edit in the browser. Don't do in the browser. You open the application, and then if you are doing the edit, it will be extremely simple. So when we will be taking you guys on the cloud, Ramaji, we will create a video to do exactly what Kothari ji has just mentioned. So be assured that everything will be taken care. Once that is done, then you will be able to do update the Google Sheet through your mobile as well. What I was saying is that to fall back on to your computer or laptop is that because the screen of the mobile is like only 6 inches. So if you find it difficult, I myself find sometimes difficult. So if you find it difficult, then you will also have the option to update the Google Sheet from your computer or laptop as well. Okay. So all in all, for once we move to cloud, I'm again reiterating, it will not be everyone. It will be there will be a criteria to move to cloud. Once we come up with this solution in 2 weeks time, then you only need to do is just update your Google Sheet. That's it. Nothing else you have to do. Sir, one more question can I ask? Yes, sir. मेरा sheet तो वैसे ready है. मेरा sheet वैसे ready है, but उसको launch नहीं किया. If you want to see that slide, I can show the slide right now. But अभी वो final नहीं किया है. तो आप जैसा decide करो कि अगर आप you want to see that particular जो annual जो cloud वाला solution है, if you want to see that slide, I can show that slide. It will take 5 minutes. Or once we finalize, then we'll show as you decide. I have no problem. Sir, draft file बना. हाँ बोलिए. Yeah, may I interrupt? My system is Windows 7 Ultimate, my older laptop. Will it be applicable to run? नहीं, फिर problem नहीं है. Cloud में फिर problem नहीं आएगा आपको. Yeah, once you're on cloud, you don't have to worry about that you have Mac or Linux or Windows 7 or anything. I mean, you will be able to. I mean, this is gonna be all those things will be taken care of. Yeah. So you don't have to worry about. Rakesh ji and Kothari ji, actually, I'm much more interested in this thing, but because of time constraint and all these things, I'm not started. And the monthly charges is not issue, but something that I will take some time to understand with your help. And if it goes onto the cloud platform, then I will initiate things in a proper way. For
the offsets and all these things that I have observed, I want to make a comment. If you can get a use and help of all these things, what we consider as an offset or the values, as per my observation, if you go on charting on a smaller time frame on the Renko chart, we'll get a auto option in which we can get a exactly what is a offset that is to be placed. This is my observation. Now, can you explain on the Renko chart right now? Yes, sir. Ek minute. If I'm not. Yes, sir. That will be great. Actually, that will be great to see. I think what you're talking about is the ATR, what we can get from that Renko chart. But we would love to have a presentation from you if possible, sir. Right now. Yeah. If possible, right now. When I say presentation, I mean just show us what exactly you're talking about, so that everyone gets benefited by that. Just a minute, sir. I means how can I'm on mobile? Can I share my screen on mobile? आप मोबाइल पे वो शेयर स्क्रीन चाहिए, देखिए सेंटर में आपका रहेगा शेयर स्क्रीन, नीचे रहेगा. यस सर, शेयर. ओके, वो शेयर स्क्रीन करो तो आपका मोबाइल हमको दिखेगा. मोबाइल स्क्रीन, ओके. या share that screen. Okay. Now you can see, sir. नहीं आया अभी. Now you can see. ना. UPL chart. नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा अभी आपको. You to start the share screen. एक मिनट sir, एक मिनट. I will just again go to my share screen and then select the what you want to show to us. हाँ अभी आया. Now it's come. Yes sir. Now you can see the UPL chart. I will just show you. UPL. Okay. Now this is just the monthly chart. I will just make it plain chart. Just a minute. Plain chart. Okay. Sir, instead of medical, you should have gone for engineering. No, sir. MBA finance. Sir, no, sir. I am too infant in the technology, sir. So, sir, I am going. Yeah. So, sir, I am going into 5-minute chart. Now you can see. Yeah. Now in this, I can go for the Renko chart. Okay. Renko और Henkashin तो दोनों same होते हैं ना almost. नहीं sir, नहीं sir. No, sir, this is I think this is Renko is kind of point and figure. Yes sir. Now we have to decide that what Renko means. Renko has the price range. It is not like the candlestick chart, but we have some auto button there. So the set range is 2.0211. That is the auto select. So in this 5 minute of the time frame, if we have the offset of ₹2, we can select this range. Now this range of support and resistance, I am just plotting. Just a minute, sir. Is a horizontal line. Okay. Now this range is between 818.42 and 830. Okay. So the range of auto is that we have the ₹2 of range in between these two. So just a minute. I again go for a Renko chart. If we go from this to the 3 minute. Okay. Now this range is like this, but if you go for a setting, now it is changed by 0.11 rupees, means by 7 paisa it has been reduced if you change the time frame. So we can have this range of I think is a 12 rupees, and in this grid, if we change it to the candlestick chart, this is exactly range we get. Now if we go for the 29th of last trading day, this was a range which was already we got it on the Renko chart, like a range. The previous resistance was on
the 13th of April, then the 21st of April, and these are the supports that we got on a multiple time. So this range with offset, we can decide what is a trading range we expect. Now we can go for the previous days also. These are the ranges. We can see that between the 25th of April till the 28th of April. These are the 4 days of range. So we can expect that this range will hold for these 4 days, because we have support, multiple support. We can see that right on the 7th of April, then the 18th of April, and again this become a support. So we can have some idea what will be the offset value we can keep. Now if we put a offset value of ₹2 with support and resistance into consideration, then we could have traded in this range right from the 24th of April up till this breakout happen up to 28th of April. So this is my understanding to apply the offset on Renko chart depending on the 5-minute or the 3-minute, because most of the time what happens that once that the price band which is calculated automatically on the chart IQ, it is not applicable on the trading view because it calculate on the ATR base, and if we change it to percentage base, it is in a log form. But in this format, only on chart IQ we can get it in the percentage, basically in the form of the auto. So I can show the another example of Reliance. Yeah, the Reliance has the 3-minute chart. Now in this we can go to 5-minute time frame. Now this is the support and this is the resistance that we can see, the 2850 and 2797. So this is the 10-minute. We can go to larger time frame also, but these are the range which we can play between the 28th of the 28th of April up till yesterday. So I can show you the offset for this will change again. Now this is the offset of ₹4 and 29 paisa. What do you mean by the 4 rupees 29 paisa? What is meaning of 420? What is meaning of sir. Yeah. So this is the range that we can play for playing the offset. Means every ₹4 buy sell. Yeah. So you mean to say you will get the value from this chart and this value you will put in our algo trader? Very fantastic. Yeah, this is the concept I thought because I have watched your webinar. So I was in a deep thinking that what is a solution for putting the offset value, because it varies from the stock to stock. राकेश जी आपको आया समझ में? Yes sir, fantastic it is. It looks very nice. Actually we have to try that. अच्छा भारती में निकालो थोड़ा, एक बार भारती में बताइए. क्योंकि भारती आई एम ट्रेडिंग एवरी डे. भारती में दिखाइए. कैसे करेंगे आप? नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये मैंने अरे हम कर लेंगे, वो मैं कर लूंगा. हाँ तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को? I have to go to the 3-minute chart. या अभी 5 मिनट कर लेते सर हम. ओके 5 मिनट कीजिए, ठीक है. अभी 5 मिनट. ये अगर लार्जर टाइम फ्रेम में जाएगा ना सर, तो उसका जो रेंज रहता है, रिंको ब्रिक का जो रेंज रहता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है. अभी मैं देखो डेली में जाऊंगा ना, तो रिंको ब्रिक का जो रेंज रहेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ. रिंको ब्रिज का रेंज जो है वो ₹14 का है. अच्छा. ओहो. और अभी 5 मिनट में जाऊंगा तो मेरा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, तो दिस इज 760 इज अ रेजिस्टेंस एंड 720 is my support, but my offset range for 5 minutes can be ₹1.31. अच्छा. ₹1.30 is a range.
if I can play and put the orders accordingly, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि कैसा है वो आपसे और but the time frame, how do you, Mr. Hemant? Yes, the sir, time frame, actually, whether to follow 5 minutes or 3 minutes for intraday, how do you decide? Yeah, actually मैंने अभी कुछ decide नहीं किया, but what I thought that ये concept बता रहे हैं, yeah, the concept is that on 5 minutes you get a fair idea of what is the support and resistance range. Now नहीं मुझे लग रहा है हेमंत जी कि अगर 5 मिनट में that means कि भारती is expected to move by 1 rupee 30 paisa higher or 1 rupee 30 paisa lower in 5 minutes. इसका मतलब ये है now sir, yeah, correct. Yeah, यही हुआ ना कि या तो 1 रुपया 30 पैसा ऊपर जाएगा या 1 रुपया 30 पैसा नीचे आएगा. Yes, now just to decide the trend, we can just go on the candlestick chart and we can go on 1 hourly time from daily view. Now we can see that 1 hourly chart, it is making in the range. So to decide that whether we have to buy or sell, so this is the lower range. 730 is a range where it will come and expected to bounce, and this is the resistance, strong resistance range where it has a sharp fall. 760 is a strong sell, so we can play between 730 to 760 range. With if the market opened by tomorrow in this range at 730, then we can expect that this can bounce and goes up to 745. Or if प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमारा एल्गो तो स्टार्ट हो जाता है 9:15 पे, तो 9:15 पे हम कैसे सेट ऑफ डालेंगे इससे? No sir, I think we have to look at yesterday's Renko and take the range from that, no? Yeah, now it basically it's showing the open low with a rapid fall. So some technical analysis we can think of that if it's open at 740, it can range up to the 750 only. So, or if it opened down, then we can expect this range to go to 720. But Hemanji, yes sir, you are going a bit wrong way. Sir, how? आपको पहले देखना चाहिए डेली का क्या ATR है रेंको का, और आप कितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से उसको ऑफसेट सेट करना है. सर मैं एक्चुअली मेरा जो कंसेप्ट है ना, वो आप जो कॉन्सेप्ट दिखा रहे हो वो जहां आप 3 मिनट 5 मिनट का कर रहे हो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा. ओके, आप पहला डेली का निकालो कितना वैल्यू है. डेली का निकाल लो. अभी डेली का जो ऑफसेट आ रहा है ना सर इसका, वो आ रहा है 14 रुपीज. तो आपको अगर 14 रुपये में आपको कितना ट्रेड करना है, अगर आपको 3 ट्रेड करना है तो 5 रुपये का ऑफसेट रखिए, अगर आपको 2 ट्रेड करना है तो 7.5 का ऑफसेट रखिए, अगर आपको 1 ट्रेड करना है तो 15 रुपये का ऑफसेट रखिए. हाँ, एक मिनट. तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, ये 14 रुपए का रेंज आ गया ना, तो जो हमारा ट्रेडिंग रेंज जो हम डाल रहे हैं, लोअर ट्रेडिंग रेंज और हायर ट्रेडिंग रेंज, दैट वी कैन पुट एज अ 14 रुपए डिफरेंस. ओके, नाउ सर उसके अंदर अपने 3-4 ट्रेड हो जाएंगे आराम से. 3-4 साइकिल पूरी हो जाएगी. 3 मिनट और 2 मिनट देख रहे हैं ना, 1.5 रुपया 2 रुपया, वो कम से कम 14 रुपये में 7-8 ट्रेड हो जाएगा आपका. बराबर. और वो आपका यूनि डायरेक्शन चला जाएगा, वन साइड जाने का चांसेस है. ओके, आप उसको जहां से पकड़ना है वहां नहीं पकड़ रहे हो रेनको को, आप रेनको को गलत तरीके से पकड़ रहे हो. ओके, तो रेनको को डेली से पकड़ना है और वो अपने को ट्रेडिंग रेंज में हायर और लो वाला डाल देना है. आपके हिसाब से आपको कितना ट्रेड एक दिन में लेना है. नहीं, मेरे को मैक्सिमम ट्रेड लेना है. देखिए 5 से 6 कैंडल आपको एक ही रेंज का मिलेगा, इधर रेड और ग्रीन. यस, तो मैक्स टू मैक्स 5 या 6 और कभी कभी 8-9 भी जाता है. बराबर है. उतनी कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए वन साइडेड जाने के बाद. बराबर है. नहीं तो रेनको में आप फंस जाओगे. आप ये 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपीज का देखोगे तो आप फंस जाओगे. ओके, आपको पहले ये देखना है डेली का मूवमेंट क्या है, और ये भी आपको असर्टन करना है अगर 4 रेड कैंडल आया इसका मतलब है मेरा 14 into 4 56 रुपीज का डाउन साइड आ सकता है. अब मैं 56 रुपीज का डाउन साइड देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, ये सबसे पहला सवाल आता है. बराबर है. अगर 56 रुपीज का डाउनफॉल नहीं देख पा रहे हो तो आपको गैप बढ़ाना पड़ेगा. बराबर है. सो रादर देन 14 रुपीज आई कैन गो फॉर
वो 16 और आपको 18। डिसाइड करना है आपको कितने लॉट लेने हैं सर 14 में। लॉट नहीं कैश का ही कैश सोच में रहा मतलब हूँ। इक्विटी कितने लेने हैं, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 5 ट्रेड। ओके। अगर आपको 2 ट्रेड लेने हैं तो 14 डिवाइडेड बाई 2, आपको 1 ट्रेड लेना है 14 डिवाइडेड बाई 1, 5 ट्रेड लेना है 14 डिवाइडेड बाई 5। बराबर है। वो आपको कितने ट्रेड एक दिन में लेने हैं उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है ऑफसेट क्या रखना है। बराबर है सर। आप वो 1 मिनट का 1.5 रुपया 2 रुपया रखोगे तो आपको तकलीफ में आएगा आप। बराबर है। दिस इज अ न्यू प्रोस्पेक्ट बट एटलीस्ट वी कैन थिंक। अभी आपने ऐसा बोला, अभी रिलायंस का जो है 25 रुपया आएगा आपको रिलायंस में। एक मिनट, डेली का जो है वो ATR में देखता हूँ कितना है, बराबर 50 रुपीज। तो अभी 50 रुपीज। में अगर आपको 3 ट्रेड लेना है तो आप 18 या 19 का रखोगे, 17 या 18 का। बराबर है सर। अगर आपको दो ही ट्रेड लेना है तो 24 का रखोगे, एक ही ट्रेड बराबर। लेना है तो 50 का रखोगे। मान लो मेरे को लेना है 25 ट्रेड, तो आप 2 रुपये रखिए। 2 रुपये। लेकिन जरूरी नहीं है सर एक कैंडल के बाद, ये एक कैंडल का बात हो रहा है 59 रुपीज का, ये 7 कैंडल या 6 कैंडल भी हो सकता है। देखिए अभी इसमें 1 2 3 4, एक मिनट चेंज मत कीजिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब 10 इंटू 50, 500 रुपए का मूवमेंट एक साइड दिया है उसने। कैसे 500 रुपए कैसे दिया है? हाँ 2200। कितने कैंडल है देखो उसमें, 50 से मल्टीप्लाई करो। हाँ 2200 से 2700, 500 रुपए का दिया है। बराबर है, बराबर है। हाँ। तो आप 500 रुपए में बेयर करने के लिए तैयार हो, जितना कम रहेगा तो उसके हिसाब से है। बट ये एक दिन का थोड़ी है, कितने दिन का है ये 500 इसमें रुपए? डेज नहीं आते हैं सर, कैंडल साइज आता है। सर एक मिनट, डेज का जो है ना वो नहीं आपको डेज में बोलता नहीं हूँ। आएगा सर ये। नहीं सर आया सर, ये नहीं 7 आप निकाल सकते हो डेज का, लेकिन ये हाँ। कितने दिन में ये कैंडल चेंज होगा ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते उसका ये 50 पॉइंट जब ब्रेक होगा तब नया कैंडल बनेगा। ये सर अभी देखो 7 हाँ। मार्च है ना, 7 मार्च में जो 2200 के आसपास था प्राइस, वो अभी तक गया है 21 अप्रैल तक। इतना रेंज है 2200 से 2800 तक बेसिकली गया है, 2300 से 2800 तक, तो 500 पॉइंट है। अगर हम कैंडल स्टिक में जाते हैं वही पॉइंट दिखाएगा, पॉइंट में कोई फर्क नहीं दिखाएगा सर। ये कुछ नहीं, लेकिन ये जो है वो यहाँ से चालू हुआ सर, मार्च से, बेसिकली 8 इसमें मार्च से। आपको ये देखना है, कभी कभार वो 9-10 कैंडल, 12 कैंडल, 15 कैंडल भी देता है। यस सर। वो आप प्रिडिक्ट पहले नहीं कर सकते हो कितना कैंडल आएगा। बराबर है। तो वो चीज अगर आप इसके बेसिस पे आप सेट करोगे तो वन डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने समझो रिलायंस को सेल करने में लगा दिया, हाँ। आपने सोचा 5 कैंडल जाएगा, 6 कैंडल जाएगा, ये गया 15 कैंडल, 10 कैंडल, क्या करोगे? इसलिए हिम्मत नहीं हो रही सर, ये नहीं, आपको लॉजिक क्या देखना है, आप लॉजिक को, आपको पहले से ट्रेंड फाइंड आउट किया आपने। अगर आपको लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो ये जब रेड आ रहा है तो आप इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हो, बराबर है, ये फ्यूचर के गेन के लिए। बाकी इसमें आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरे को इतने के बाद मूवमेंट आएगा ही आएगा। सर मेरा पर्पस एक ही था सर, कि स्टॉक में हम जो ATR देखते हैं ना बेसिकली ऑफसेट के लिए, तो ये दिस इज वन अनदर मेथड दैट वी कैन से दैट कि मूवमेंट ऑफ द स्टॉक कैन बी इन दिस रेंज ऑन अ डेली बेसिस। या बट 49 कैंडल्स, कितने कैंडल्स बनेंगे ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है सर। बराबर है सर। 4 कैंडल बनेगा, 2, अभी यहाँ पे आपका 1 कैंडल के बाद कलर चेंज हो गया। हाँ। यहाँ आपके 3 कैंडल के बाद कलर चेंज हो गया, 1 कैंडल ही आया, फिर 2 कैंडल आया, फिर 1 कैंडल आया, फिर 2 कैंडल आया। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ना कितने का सब मूवमेंट आएगा। और उसमें एक प्रॉब्लम क्या है सर, कि नाउ वी आर सीइंग इन द अरिथमेटिक स्केल, इन लॉगरिथमिक स्केल this 49 value will change as per the stock value increases and the decreases. This is the problem. But if you're playing on a short term basis, ये 2-3 दिन का जो रेंज रहता है 50 रुपीज का, वो ज्यादा चेंज नहीं होता, बिकॉज नाउ दिस रेंज इज बिटवीन द 2700 टू 2900। ये आप अगर ये दिन पे देखते 7th ऑफ मार्च, तो उसका जो रेंको का जो वैल्यू था वो डिफरेंट रह सकता है सर। ये उसमें उतना ज्यादा, एक ज्यादा पॉइंट में फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको सिर्फ आधा 50 पैसा 1 रुपया इधर उधर होता है, ज्यादा ड्रास्टिकली फॉल नहीं होता है, तब तक ये चेंज नहीं होता है।
बराबर है। जब ये ड्रास्टिकली कोई भी स्क्रिप्ट गिरेगा 2000 से 1000 गिरा तो ये वैल्यू में फर्क आएगा, नहीं तो ये वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये जो रेड गिरता है तब आप एक्यूमुलेशन का सोच सकते हो कि मैं इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर दूं। अभी सर बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो इसके हिसाब से अभी 325 जो पॉइंट है बेसिकली उसका उतना रेंज आ रहा है। नहीं अभी आप अगर आप याद एक ध्यान में रखो, ये 325 एटीआर नहीं है, ये ध्यान में रखिए आप। यस सर। अगर आप एटीआर निकालोगे इसका बैंक निफ्टी का तो ये 325 नहीं दिखाएगा, उससे ज्यादा दिखाएगा। एक मिनट, ये रेनको का बॉक्स जो है ना वो वैसा नहीं है सर, इट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी इसमें ATR 14 अगर हम डालते हैं तो वो एक्चुअली कैंडल में जाना पड़ेगा, तो उसका जो डेली का 737 737 दिखा रहा है। तो आपका ये रेंको 340 दिखा रहा है, 50% दिखा रहा है। वो रेंको का, वो एक्चुअली आपने गलती की, आप रेंको पे जाइए वापस। एक मिनट सर, आपका तरीका गलत है। या रेंको पे ATR 422 है। नहीं आप रेंको में जाइए पहले, वापस वो बॉक्स में जाइए। यस सर। बॉक्स सेटिंग में निकालिए। अब यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कीजिए, ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। सर ऑटो ही आता है सर, वो ऑटोमेटिक ही आता है। तो 406 ये फिर 7 आपका ATR 675 है या 700 है, तो ये 400 आधा ही दिखा रहा है ना सर। वो एक्चुअली कैंडल स्टिक चार्ट पे जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, उसके हिसाब से जो ATR है वो आता है। अभी रेंको चार्ट के हिसाब से इसका जो ATR जो है वो 406 है, लेकिन नीचे जो 14 डेज का ATR है वो 422.48 है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, अगर आपका डेली का चार्ट का 700 का ATR है तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ये 2 कैंडल आपका एक ATR में कवर होएगा। बराबर। तो आपको वो भी चीज देखना पड़ेगा कि एक्चुअल ATR क्या है। बराबर। अगर आपका ATR मैच होता है तो आप ये अज्यूम कर सकते हो। और ATR का भी कैसा रहता है कि अगर आपका नॉर्मली 3 to 4 टाइम्स ATR जा सकता है वन साइडेड मूवमेंट, तो अगर 700 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी 2500 से 3000 रुपया तक का मूवमेंट आ सकता है एक साइड में। बराबर है। अगर आप देखोगे उतना ही मूवमेंट जनरली आता है। यस सर। तो अगर ATR बढ़ गया मतलब आपका फॉल ज्यादा हो सकता है या राइस ज्यादा हो सकता है। ATR कम हो गया तो उसके हिसाब से फॉल और राइस में चेंज आएगा। बराबर। क्योंकि तो इसको जो लॉजिक आप लगाओगे इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व है। सिर्फ एक पर्टिकुलरली कैंडल देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको इसमें मल्टीपल चीज देखना पड़ेगा। बराबर है। एक्चुअली जनरली व्हाट आई डू दैट आई कैन पुट अ मूविंग एवरेज। जनरली स्टैंडर्ड जो है, जो डिफाइन एज वाले बोलते हैं कि 10 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो अगर लगाया और उसके ऊपर अगर 2 कैंडल क्लोज हुआ देन इट्स द बुलिश साइन, और उसके नीचे अगर 2 रेंको का कैंडल अगर क्लोज होता है देन दैट्स अ बेयरिश साइन। वो तो डिफरेंट है एक्चुअली टेक्निकल, बट माय पर्पस ये जो चीज है ना आप जो दिखा रहे हो ना अभी रेंको, दैट इज यूज्ड फॉर ग्रिड ट्रेडिंग, बाकी कोई चीज के लिए यूज नहीं होता है। या अगर आपको ग्रिड ट्रेडिंग करना है तो रेंको चार्ट जरूरी है। यस सर। तो जस्ट मेरा एक जो कंसेप्ट है वो अगर आप राकेश जी और अगर अपना पीके जी अगर कुछ यूटिलाइज करके उसमें कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मैं तो रेंको चार्ट यूज ही कर रहा हूँ, मेरे काम के लिए मैं तो रेंको चार्ट यूज ही कर रहा हूँ। यस सर। रेंको चार्ट्स अलग से स्टाइल है, उससे सब सिस्टम में आपका चलेगा नहीं। रेंको चार्ट्स के लिए आप ग्रिड ट्रेडिंग करना चाह रहे तो ही चलेगा। ओके। नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं चलेगा वो रेंको चार्ट, क्योंकि नहीं चलता आप प्रेडिक्टिकली ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 9 कैंडल 10 कैंडल 12 कैंडल कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो मैं सर पेपर ट्रेड करके देखा इसलिए चुप बैठा हूँ, इसलिए मैंने आज आपका वेबिनार है ना पीताम्बरम जी? आज शाम को वेबिनार है ना आपका? हाँ 6 से 9। अच्छा। आज ये ग्रिड ट्रेडिंग पे इनका वेबिनार है, तो इफ एनीबॉडी वांट टू अटेंड हिज वेबिनार देन ही कैन अटेंड। ही कैन जस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट टू हिम, ही विल सेंड यू द लिंक। नहीं सर, इट्स ए पेड है सर, फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ वो पेड का जो भी है तो वो गूगल फॉर्म भर के एंड देन यू कैन अटेंड दिस ग्रिड ट्रेडिंग वाला जो इनका वेबिनार। रेंको चार्ट सिर्फ ग्रिड ट्रेडिंग में ही यूज होता है और कहीं नहीं यूज होता है। अच्छा। सर पीताम्बरम जी, अगर मैं एक्चुअली 6 बजे अगर मेरा कमिटमेंट नहीं रहेगा तो 1-2 घंटे पहले फॉर्म भर के पैसे दिए तो चलेगा क्या? चलेगा सर। मेरे को क्या है, लिंक आपका लास्ट मोमेंट में आएगा ना तो इशू ये रहता है, मेरे को वो लिंक शेयर करना वो उसी में इश्यू रहता है।
नहीं 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा सर। मैं 4 बजे तक, तो उस टाइम आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके। हाँ, क्योंकि लिंक तो मैंने जनरली जो बाकी पार्टिसिपेंट्स को शेयर किया हुआ है, अब लेट जिसका जिसका एंट्री आएगा उन्हीं को फिर मेरे को शेयर करना पड़ता है। सर एक जस्ट रिक्वेस्ट है, राकेश जी, पीके जी और बाकी सब लोग, मैंने जो ये जो बोला है बेसिकली क्लाउड का, वो अगर होता है तो फिर अच्छा हो जाएगा सर मेरे। हाँ, वो क्लाउड का बता रहे हैं ना कि मैं बताया ना, क्लाउड में मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक के पहले में ऑफिशियली इसको लॉन्च कर देंगे। अगर आपको स्लाइड देखना है तो स्लाइड तो रेडी है मेरी, बट उसको भी लॉन्च किया नहीं है मैंने। इफ यू वांट टू सी द स्लाइड, आई कैन शो द स्लाइड राइट नाउ। एंड सेकंड थिंग इज दैट आई जस्ट ओपन द फिनविशिया अकाउंट। अगर कुछ भी अल्गो चालू करना है तो आई एम वो मैं नॉट कर दूंगा। नहीं, वो उसकी चिंता मत करो, दैट विल डू इट। वो 10 मिनट लगता है, वो 10 मिनट लगता है। ओके सर, वो आपका एनी डेस्क पे वी विल कनेक्ट यू ऑन द एनी डेस्क एंड देन वी विल डू ऑल द सेटअप फॉर यू, डोंट वरी। यस उसकी सर, चिंता मत ओके। करो। दैट सर्विस वी आर गिविंग टू एवरीबॉडी। एनी प्रॉब्लम, एनी इशू कमिंग, एनी एरर मैसेज कमिंग, तो दैट वी आर रिजॉल्विंग ऑन द स्पॉट, डोंट वरी। यस सर, थैंक यू। क्योंकि जो सारा जो एरर आता है ना, वो आपके सेटिंग में एरर आता है। एल्गो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्गो इज वर्किंग परफेक्टली। लेकिन अगर आपने वो उसमें इनपुट वैल्यूज को उल्टा सीधा गलत डाल दिया तो एरर आता है, तो उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। और किसी का क्वेश्चन है? बिकॉज ऑलरेडी वी आर 1:30 नाउ, विल फिनिश इन अनदर 3 मिनट। किसी का एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? सर पीताम्बरम जी का फीस कितना है? पीताम्बरम जी बताएंगे। पीताम्बरम जी आपका क्या है उसका? इट्स 499। 499। ओके। और होम टू पे वो दिया हुआ है लिंक में, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वाले में कोई भी है उधर लिंक दिया हुआ है। ओके ओके। नहीं, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपका क्या व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दो यहाँ पे, अगर आप डालना है तो। अभी तो जिसको कोई ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेंगे। you can share that link or you can send that link to me. I will send it to मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भेजू ना मैं? हाँ, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, तो फिर वो उसमें जाके आपका वो लिंक देख लेंगे। और उसके बाद में फिर एक बार लिंक डालना तो फिर तब लोगों को दिखेगा ना, तो अर्लियर मैसेजेस लोगों को नजर नहीं आएंगे। नहीं आएगा वो। हाँ, तो आप पहले व्हाट्सएप का अभी डालो यहाँ पे, उससे लोग ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद में 15 मिनट के बाद में फिर आप अपना ये जूम मीटिंग का लिंक डालना, तो देन एनीबॉडी कैन सी दैट लिंक। ऐसा कीजिए। अभी आपका जो है व्हाट्सएप वाला लिंक लेके यहाँ डाल दो आप, और नहीं तो मुझे भेज दो, तो मैं भेज दूँ। मैं आपको भेज देता हूँ लिंक, या मुझे भेज दीजिए। बट मेरे को प्रॉब्लम ये होगा कि मैं इन लोगों को कैसे भेज पाऊंगा। तो अभी भेजिए, मैं अभी पोस्ट कर दूंगा मैं। 1 मिनट। देन आई कैन पोस्ट राइट। मीनवाइल और कोई क्वेश्चन है तो बताइए किसी का। श्रीवास्तव जी, आर यू देयर? लिंक शेयर किया है सर, या एक मिनट, मैसेज में शेयर किया है। हाँ, या आ गया मेरे को। अच्छा, यहीं पे आपने शेयर किया क्या? हाँ हाँ। हाँ, या join the group. हाँ, तो you can join this group through this link and then पताम्बरम जी क्या कीजिए, आप 15 मिनट के बाद में अपना वो जूम लिंक शेयर कीजिए किसी ग्रुप, आपके ग्रुप के अंदर, तो पब्लिक को वहां देख के दे कैन मेक द पेमेंट। ठीक है ना, ऐसा करेंगे। ओके, या सो और किसी का क्वेश्चन है तो विल एंड नाउ, ऑलरेडी इट्स लंच टाइम। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। जो हम बाय सेल का जो भी बनाते ग्रिड, तो उसमें मेरा अभी नया जो सेबी का नया रूल आया है, which is applicable from the tomorrow, I think, that you should have the 50% of a cash of the equity for utilization of the trading only. So if we have to do a buy sell, if I start the grid and buy sell thing, what is the capital required for the particular script? उसका कुछ अंदाजा आ सकता है क्या? नहीं, मैं तो अभी वो रूल देखा नहीं है, पहली बात तो मैं स्टडी करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपका ऑर्डर ब्रोकर नहीं जाने दे रहा है तो दैट मींस कि आपका वही कंट्रोल हो गया ना भाई। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो वहां भी आप कोई भी ब्रोकर हो, अगर आप एक नॉर्मल ऑर्डर डालते हैं और वो ऑर्डर जा रहा है तो एल्गो में भी जाएगा, अगर नॉर्मल ऑर्डर नहीं जा रहा है तो एल्गो में भी नहीं जाएगा। ठीक है ना? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा सर, अगर यूपीएल 750 है, उसका ट्रेडिंग रेंज हमने 20-20 रुपया रखा और ऑफसेट उसका 5 रुपीज रखा,
तो उसमें अपना कितना बेसिकली MIS ऑर्डर में कितना ट्रेडिंग अकाउंट में मनी होना चाहिए, उसका कुछ अंदाजा आ सकता है क्या? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, वो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। कैन एनीबडी एल्स एक्सप्लेन? मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, बिकॉज मींस अगर मार्जिन शॉर्टफॉल रहता है तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। MIS में जनरली 20% पैसा चाहिए आपको। ओके, नो सर, इन गुड स्क्रिप्ट्स, इन गुड स्क्रिप्ट्स। मेरा क्वेश्चन इतना ही है, अगर मेरा मैक्सिमम बाय क्वांटिटी और वो सेल क्वांटिटी जो है वो मैंने अगर 20-20 भी रखा विद द ट्रेडिंग रेंज ऑफ उतना 20-20 रुपया और ऑफसेट उसका 5-5 रुपीज, फिर भी वो मल्टीपल बाय सेल होता रहेगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो 1 लाख के ऊपर जाएगा या उसका 3 लाख लगेगा। आपने टोटल क्वांटिटी जो रखा है मल्टीप्लाइड बाय 20% ऑफ द मार्केट वैल्यू। ओके, मैंने अगर 100 रखा है और 750 अगर उसका बेसिकली प्राइस है तो 7,50,000 रुपया। आप MIS की बात कर रहे हो कि डिलीवरी की बात कर रहे हो? नहीं सर, MIS का बोल रहा हूँ। MIS का 20% ऑफ 7.5 lakhs, दैट इज 1.5 lakhs में आपका ट्रेड हो जाएगा। और अगर पोजिशनल रहेगा तो 7.5 पूरा 7.5 लाख चाहिए। 7.5 लगेगा ही। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। या Any other question, or we'll end? So thanks a lot, friends, and most probably we'll have a webinar on currency trading in the next Sunday. On the next Sunday, it will be on the currency trading, how to do and all those things. What are the requirements and how we can make money every day through this our algo. All those I will explain. But mainly it will be the basics of currency trading we will discuss. So thanks a lot. Thank you very much, and bye. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Bye.